आइटम नंबर 1 माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Honourable Speaker, I present the budget for 2023-2024. This is the first budget in Amrit Kal. This budget hopes to build on the foundation laid in the previous budget and the blueprint drawn for India at 100. We envision a prosperous and inclusive India in which the fruits of development will reach all sections and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, scheduled castes and scheduled tribes. In the 75th year of our independence, the world has recognized the Indian economy as a bright star. Our current year's economic growth is estimated to be at 7%. It is notable that this is the highest among all the major economies. This is in spite of the massive slowdown globally caused by COVID-19 and the war. The Indian economy is therefore on the right track and despite a time of challenges, heading towards a bright future. Today, as Indians stand with their head held high and the world appreciates India's achievements and successes, we are sure that elders who had fought for India's independence will, with joy, bless us in our endeavours going forward as well. Our focus on wide-ranging reforms and sound policies implemented through Sabka Prayas, resulting in Jan Bhagidari and targeted support to those in need, helped us perform well in trying times. India's rising global profile is because of the several accomplishments. Unique world-class digital public infrastructure, example, Aadhaar, CoWIN and UPI. COVID vaccination drive in unparalleled scale and speed, proactive role in frontier areas such as achieving the climate-related goals, Mission Life and National Hydrogen Mission. During the COVID-19 pandemic, we ensured that no one goes to bed hungry with a scheme to supply free food grains to over 80 crore persons for 28 months. Continuing our commitment to ensure food and nutritional security, we are implementing from 1st January 2023 a scheme to supply free food grain to all Antyodaya and priority households for the next 1 year. Under PM Garib Kalyan Anna Yojana, the entire expenditure of about 2 lakh crore will be borne by the central government. In these times of global challenges, the G20 presidency gives us a unique opportunity to strengthen India's role in the world economic order. With the theme of Vasudhaiva Kutumbakam, we are steering an ambitious people-centric agenda to address global challenges and to facilitate sustainable economic development. The government's efforts since 2014 have ensured for all citizens a better quality of life and life of dignity. The per capita income has more than doubled to 1.97 lakh rupees. In these 9 years, the Indian economy
has increased in size from being 10th to 5th largest in the world. We have significantly improved our position as well as a well-governed and innovative country with a conducive environment for business as reflected in several global indices. We have made a significant progress in many sustainable development goals. The economy has become a lot more formalized as reflected in the EPFO membership, more than doubling to 27 crore and rupees 7,400 crore digital payments of 126 lakh crore rupees through UPI in 2022. The efficient implementation of many schemes with universalization of targeted benefits has resulted in inclusive development. Some of the schemes are 11.7 crore household toilets under Swachh Bharat mission, which is achieved, 9.6 crore LPG connections under Ujjwala, 220 crore COVID vaccination of 102 crore persons, 47.8 crore PM Jan Dhan bank accounts, insurance cover for 44.6 crore persons under PM Suraksha Bima and PM Jeevan Jyoti Yojana, and cash transfer of 2.2 lakh crores of rupees to 11.4 crore to over 11.4 crore farmers under PM Kisan Samman Nidhi. Our vision for the Amritkal includes technology-driven and knowledge-based economy with strong public finances and a robust financial sector. To achieve this, Jan Bhagidari through Sabka Saath, Sabka Prayas is essential. The economic agenda for achieving this vision focuses on three things. First, facilitating ample opportunities for citizens, especially the youth, to fulfill their aspirations. Second, providing strong impetus to growth and job creation. And third, strengthening macroeconomic stability. To service these focus areas in our journey to India at 100, we believe that the following four opportunities can be transformative during Amritkal. Economic empowerment of women. Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission has achieved remarkable success by mobilizing rural women into 81 lakh self-help groups. We will enable these groups to reach the next stage of economic empowerment through formation of large producer enterprises or collectives, with each having several thousand members and managed professionally. They will be helped with raw materials supply and for better design, quality, branding and marketing of their products. Through supporting these policies, they will be enabled to scale up their operations to serve the large consumer markets, as has been the case with the several startups growing into unicorns. PM Vishwakarma Kaushal Samman, PM Vikas. For centuries, traditional artisans and craftspeople who work with their hands using tools have brought renown for India. They are generally referred to as Vishwakarma. The art and the handicraft created by them represents the true spirit of Atmanirbhar Bharat. For the first time, a package of assistance for them has been conceptualized. The new scheme will enable them to improve the quality,
scale, and reach of their products, integrating them with the MSME value chain. The components of the scheme will include not only financial support, but also access to advanced skill training, knowledge of modern digital techniques, and efficient green technologies, brand promotion, linkage with local and global markets, digital payments, and social security. This will greatly benefit the scheduled castes, scheduled tribes, OBCs, women, and people belonging to the weaker sections. Tourism. The country offers immense attraction for domestic as well as foreign tourists. There is a large potential to be tapped in tourism. The sector holds huge opportunities for jobs and entrepreneurship for youth in particular. Promotion of tourism will be taken up on mission mode with active participation of states, convergence of government programs, and public-private partnerships. Green growth. We are implementing many programs for green fuel, green energy, green farming, green mobility, green buildings, and green equipment, and policies for efficient use of energy across various economic sectors. These green growth efforts help in reducing carbon intensity of the economy and provides for large-scale green job opportunities. Priorities of this budget. The budget adopts the following 7 priorities. They complement each other and act as the Saptarishi guiding us through the Amritkal. Inclusive development, reaching the last mile, infrastructure and investment, unleashing the potential, green growth, youth power, and financial sector. I now speak on the priority number 1, inclusive development. The government's philosophy of Sabka Saath, Sabka Vikas has facilitated inclusive development covering in specific farmers, women, youth, OBCs, scheduled castes, scheduled tribes, Divyangjan, and economically weaker sections, and overall priority for the underprivileged, Vanchiton ko Variyata. There has also been a sustained focus on Jammu Kashmir, Ladakh, and the Northeast. This budget builds on those efforts. Digital public infrastructure for agriculture. Digital public infrastructure for agriculture will be built as an open source, open standard, and interoperable public good. This will enable inclusive farmer-centric solutions through relevant information services for crop planning and health, improved access to farm inputs, credit and insurance, help for crop estimation, market intelligence, and support for growth of agri-tech industry and startups. An agriculture accelerator fund. An agriculture accelerator fund will be set up to encourage agri-startups by young entrepreneurs in rural areas. The fund will aim at bringing innovative and affordable solutions for challenges faced by farmers. It will also bring in modern technologies to transform agricultural practices, increase productivity and profitability. To enhance the productivity of extra long staple cotton, we will adopt a cluster-based and value chain approach through public-private partnerships. This will mean collaboration between farmers, state and industry for input supplies, extension services and market linkages. We will launch an Atmanirbhar Clean Plant program to boost availability of disease-free, quality planting material,
for high-value horticultural crops at an outlay of 2,200 crores. Global hub for millets, millets which are Sri Anna. India is the forefront. India is at the forefront of popularizing millets, whose consumption furthers nutrition, food security, and welfare of farmers, said the Honorable Prime Minister. We are the largest producer and second largest exporter of Sri Anna in the world. We grow several types of Sri Anna, such as Sri Anna Jowar, Sri Anna Ragi, Sri Anna Bajra, Sri Anna Kutu, Ramdana, Kangni, Kutni, Kutki, Kodo, China, and Sama. These have a number of health benefits and have been an integral part of our food for centuries. I acknowledge with pride the huge service done by small farmers in contributing to the health of fellow citizens by growing these Sri Anna. Now, to make India a global hub for Sri Anna, the Indian Institute of Millet Research, ideally Indian Institute of the Sri Anna Research, Hyderabad, will be supported as the center of excellence for sharing best practices, research, and technologies at the international level. The agricultural credit target will be increased to 20 lakh crores with focus on animal husbandry, dairy, and fisheries. We will launch a new sub-scheme of PM Matsya Sampada Yojana, which is an existing scheme, but we'll launch a new sub-scheme with targeted investment of 6,000 crores to further enable activities of fishermen, fish vendors, and micro and small entrepreneurs, improve value chain efficiencies, and expand the market. For farmers, especially small and marginal farmers and other marginalized sections, the government is promoting cooperative-based economic development model. A new Ministry of Cooperation was formed with a mandate to realize the vision of Sahkar Se Samriddhi. To realize this vision, the government has already initiated computerization of 63,000 primary agricultural credit societies with an investment of 2,560 crores, 2,516 crores. In consultation with all the stakeholders and the states, model bylaws for PACS were formulated, enabling them to become multi-purpose PACS. A national cooperative database is being prepared for countrywide mapping of cooperative societies. With this backdrop, we will implement a plan to set up massive decentralized storage capacity. This will help farmers store their produce and realize remunerative prices through sale at appropriate times. The government will also facilitate setting up of a large number of multi-purpose cooperative societies, primary fisheries societies, and dairy cooperative societies in uncovered panchayat and villages in the next 5 years. Health, education, and skilling. 157 new nursing colleges will be established in co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014.
A mission to eliminate sickle cell anemia by 2047 will be launched. It will entail awareness creation, universal screening of 7 crore people in the age group of 0 to 40 years in affected tribal areas, and counseling through collaborative efforts of central ministries and state governments. Facilities in select ICMR labs, Indian Council for Medical Research Labs, will be made available for research by public and private medical college faculty and private sector R&D teams for encouraging collaborative research and innovation. A new program to promote research and innovation in pharmaceuticals will be taken up through centers of excellence. We shall also encourage industry to invest in research and development in specific priority areas. Dedicated multidisciplinary courses for medical devices will be supported in existing institutions to ensure availability of skilled manpower for futuristic medical technologies, high-end manufacturing and research. Teachers' training. Teachers' training will be re-envisioned through innovative pedagogy, curriculum transaction, continuous professional development, dipstick surveys, and ICT implementation. The District Institute of Education and Training will be developed as vibrant institutes of excellence for this purpose. National Digital Library for Children and Adolescents. A National Digital Library for Children and Adolescents will be set up for facilitating availability of quality books across geographies, languages, genres, and levels, and device-agnostic accessibility. States will be encouraged to set up physical libraries for them at panchayat and ward levels and provide infrastructure for accessing the national digital library resources. Additionally, to build a culture of reading and to make up for pandemic time learning loss, the National Book Trust, the Children's Book Trust, and other sources will be encouraged to provide and replenish non-curricular titles in regional languages and in English to these physical libraries. Collaboration with NGOs that work in literacy will also be a part of this initiative. To inculcate financial literacy, financial sector regulators and organizations will be encouraged to provide age-appropriate reading material to these libraries. I move to priority 2, reaching the last mile. Prime Minister Vajpayee's government had formed the Ministry of Tribal Affairs and the Department of Development of Northeast Region to provide a sharper focus to the objective of reaching the last mile. Our government has formed the Ministries of Ayush, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Skill Development, Jal Shakti and Cooperation. Building on the success of the Aspirational Districts program, the government has recently launched the Aspirational Blocks program, covering 500 blocks for saturation of essential government services across multiple domains such as health, nutrition, education, agriculture, water resources, financial inclusion, skill development, and basic infrastructure. Manya Speaker, sir, Pradhan Mantri PVTG, which is
primitive, vulnerable tribal groups development mission is being launched. To improve socio-economic conditions of the particularly vulnerable tribal groups, the PVTGs as we refer them to, Pradhan Mantri PVTG Development Mission will be launched. This will saturate PVTG families and habitations with basic facilities such as safe housing, clean drinking water and sanitation, improved access to education, health, nutrition, road and telecom connectivity, and sustainable livelihood opportunities. An amount of 15,000 crores will be made available to implement the mission in the next 3 years under the Development Action Plan for the Scheduled Tribes. Ekalavya Model Residential Schools. In the next 3 years, Center will recruit 38,800 teachers and support staff for the 740 Ekalavya Model Residential Schools, which is serving 3.5 lakh tribal students. In the drought-prone central regions of Karnataka, central assistance of 5,300 crore will be given to Upper Bhadra project to provide sustainable micro-irrigation and filling up of surface tanks for drinking water. PM Awas Yojana. The outlay for PM Awas Yojana is being enhanced by 66% to over 79,000 crores. Bharat Shared Repository of Inscriptions will be set up in a digital epigraphy museum with digitization of 1 lakh ancient inscriptions in the first stage. Support for poor prisoners. For poor persons who are in prisons and unable to afford the penalty or the bail amount, required financial support will be provided. Priority number 3, infrastructure and investment. Investments in infrastructure and productive capacity have a large multiplier impact on growth and employment. After the subdued period of the pandemic, private investments are growing again. The budget takes the lead once again to ramp up the virtuous cycle of investment and job creation. Honorable Speaker, sir, the capital investment outlay is being increased steeply for the 3rd year in a row by 33% to 10 lakh crores, which would be which would be 3.3% of GDP. This will almost be 3 times the outlay made in 2019-20. This substantial increase in recent years is central to the government's efforts to enhance growth potential and job creation, crowd in private investments, and provide a cushion against global headwinds. The direct capital investment by the centre is complemented by the provision made for creation of capital assets through grants and aids to state. The effective capital expenditure of the centre is budgeted at 13.7 lakh crore rupees, which will be 4.5% of GDP. Support to state governments for capital investment.
I have decided to continue the 50-year interest-free loan to state governments for one more year to spur investment in infrastructure and to incentivize them for complementary policy actions with a significantly enhanced outlay of 1.3 lakh crores. The newly established Infrastructure Finance Secretariat will assist all stakeholders for more private investment in infrastructure, including railways, roads, urban infrastructure and power, which are predominantly depend on public resources. The harmonized master list of infrastructure will be reviewed by an expert committee for recommending the classification and financing framework suitable for Amrit Kal. A capital outlay, I'm talking about railways now, sir, Honorable Speaker, railways. A capital outlay of 2.40 lakh crores has been provided for the railways. This is the highest ever outlay this highest ever outlay is about 9 times the outlay made in 2013-14. 100 critical transport infrastructure projects for last and first mile connectivity for ports, coal, steel, fertilizer and food grain sectors have been identified. They will be taken up on priority with investment of 75,000 crores, including 15,000 crore from private sources. 50 additional airports, heliports, water aerodromes, and advanced landing grounds will be revived for improving regional air connectivity. Sustainable cities for tomorrow. States and cities will be encouraged to undertake urban planning reforms and actions to transform our cities into sustainable cities of tomorrow. This means efficient use of land resources, adequate resources for urban infrastructure, transit-oriented development, enhanced availability and affordability of urban land and opportunities for all. Through property tax governance reforms and ring-fencing user charges on urban infrastructure, cities will be incentivized to improve their creditworthiness for municipal bonds. Like the RIDF, an Urban Infrastructure Development Fund will be established through use of priority sector lending shortfall. This will be managed by the National Housing Bank and will be used by public agencies to create urban infrastructure in Tier 2 and Tier 3 cities. States will be encouraged to leverage resources from the grants of the 15th Finance Commission as well as existing schemes to adopt appropriate user charges while accessing the UIDF. We expect to make available 10,000 crore rupees per annum for this purpose. All cities and towns will be enabled for 100% mechanical desludging of septic tanks and sewers to transition from manhole to machine hole mode. Enhanced focus will be provided for scientific management of dry and wet waste. Honorable Speaker, sir, our Prime Minister had said, good governance is the key to a nation's progress. Our government is committed to providing a transparent and accountable administration which works for the betterment and welfare of common citizens. Mission Karma Yogi. Under Mission Karma Yogi,
Center, states and the union territories are making and implementing capacity building plans for civil servants. The government has also launched an integrated online training platform, I Got Karma Yogi, to provide continuous learning opportunities for lakhs of government employees to upgrade their skills and facilitate people-centric approach. Sir, for enhancing ease of doing business, more than 39,000 compliances have been reduced and more than 3,400 legal provisions have been decriminalized. For furthering the trust-based governance, we have introduced the Jan Vishwas Bill to amend 42 central acts. This budget proposes a series of measures to unleash the potential of our economy. Centers of Excellence for Artificial Intelligence. For realizing the vision of Make AI in India and Make AI Work for India, 3 centers of excellence for artificial intelligence will be set up in top educational institutions. Leading industry players will partner in conducting interdisciplinary research, develop cutting-edge applications, and scalable problem solutions in the areas of agriculture, health, and sustainable cities. This will galvanize an effective AI ecosystem and nurture quality human resources in the field. National Data Governance Policy. To unleash innovation and research by startups and academia, a national data governance policy will be brought out. This will enable access to anonymized data. The KYC process will be simplified, adopting a risk-based instead of one-size-fits-all approach. The financial sector regulators will also be encouraged to have a KYC system fully amenable to meet the needs of digital India. One-stop solution for identity and address updating. A one-stop solution for reconciliation and updating of identity and address of individuals maintained by various government agencies, regulators, and regulated entities will be established using DigiLocker service and Aadhaar as foundational identity. Speaker, sir, common business identifier. For the business establishments required to have a permanent account number, the PAN will be used as the common identifier for all digital systems of specified government agencies. This will bring ease of doing business, and it will be facilitated through a legal mandate. For obviating the need for separate submission of same information to different government agencies, a system of unified filing process will be set up. Such filing of information or return in simplified forms on a common portal will be shared with other agencies as per the filer's choice. Vivad se Vishwas 1. Relief for MSMEs. In cases of failure by MSMEs to execute contracts during the COVID period, 95% of the forfeited amount relating to the bid or performance security will be returned to them by government and government undertakings. This will provide relief to the MSMEs. Vivad se Vishwas 2. Settling contractual disputes. To settle contractual disputes of government and government undertakings,
wherein arbitral award is under challenge in a court, a voluntary settlement scheme with standardized terms will be introduced. This will be done by offering graded settlement terms depending on pendency level of the dispute. The state support mission of Niti Aayog will be continued for 3 years for our collective efforts towards national priorities. Result-based financing. To better allocate scarce resources for competing development needs, the financing of select schemes will be changed on a pilot basis from input-based to result-based. E-courts. For efficient administration of justice, Phase 3 of e-courts projects Phase 3 of the e-courts project will be launched with an outlay of 7,000 crores. Fintech services in India have been facilitated by our digital public infrastructure, including Aadhaar, PM Jan Dhan Yojana, Video, KYC, India Stack, and UPI. To enable more fintech innovative services, the scope of documents available in DigiLocker for individuals will be expanded. An entity DigiLocker will be set up for the use by MSMEs, large businesses, and also charitable trusts. This will be towards storing and sharing documents online securely whenever needed with various authorities, regulators, banks, and other business entities. 5G services. 100 labs for developing applications using 5G services will be set up in engineering institutions. To realize a new range of opportunities, business models, and employment potential, the labs will cover, among others, applications such as smart classrooms, precision farming, intelligent transport systems, and healthcare applications. Lab-grown diamonds. Lab-grown diamonds is a technology and innovation-driven emerging sector with high employment potential. These environment-friendly diamonds, which have optically and chemically the same properties as natural diamonds. To encourage indigenous production of LGD, lab-grown diamond seeds and machines, and to reduce import dependency, a research and development grant will be provided to one of the IITs for 5 years. To reduce the cost of production, a proposal to review the custom duty on LGD seeds will be indicated in Part B of the speech. I come to the fifth priority, Honourable Speaker, sir, green growth. Honourable Prime Minister has given a vision for life or lifestyle for environment to spur a movement of environmentally conscious lifestyle. India is moving forward firmly for the Panchamrit, the net zero carbon emission by 2070 to usher in green industrial and economic transition. This budget builds on our focus on green growth. The recently launched National Green Hydrogen Mission, with an outlay of 19,700 crores, will facilitate transition of the economy to low carbon intensity, reduce dependence on fossil fuel imports, and make the country assume technology and market leadership in this sunrise sector. Our target is to reach an annual production of 5 MMT by 2030. Energy transition. This budget provides for 35,000 crores for priority capital investment towards energy transition and net zero objectives and energy security
by Ministry of Petroleum and Natural Gas. To steer the economy on sustainable development path, battery energy storage systems with capacity of 4,000 MWh will be supported with viability gap funding. A detailed framework for pumped storage projects will also be formulated. Renewable energy evacuation. The interstate transmission system for evacuation and grid integration of 13 gigawatt renewable energy from Ladakh will be constructed with investment of 20,700 crore, including central support of 8,300 crores. Green Credit Program. For encouraging behavioral change, a green credit program will be notified under the Environment Protection Act. This will incentivize environmentally sustainable and responsive actions by companies, individuals, and local bodies, and help mobilize additional resources for such activities. PM Program for Restoration, Awareness, Nourishment, and Amelioration of Mother Earth, PM Pranam, will be launched to incentivize states and union territories to promote alternative fertilizers and balanced use of chemical fertilizers. Go Bardhan Scheme. 500 new waste to wealth plants under Go Bardhan, galvanizing organic bio-agro resources done. Go Bardhan scheme will be established for promoting circular economy. These will include 200 compressed biogas plants, including 75 plants in urban areas, and 300 community or cluster-based plants at a total investment of 10,000 crores. I will refer to this in Part B also. In due course, a 5% CBG mandate will be introduced for all organizations marketing natural and biogas. For collection of biomass and distribution of biomanure, appropriate fiscal support will also be provided. Bharatiya Prakritik Kheti Bio Input Resource Centers. Over the next 3 years, we will facilitate 1 crore farmers to adopt natural farming. For this, Honorable Speaker, 10,000 bio input resource centers will be set up, creating a national level distributed micro fertilizer and pesticide manufacturing network. Mishti. Building on India's success in afforestation, mangrove initiative for shoreline habitats and tangible incomes, Mishti, will be taken up for mangrove plantation along the coastline and on salt pan lands wherever feasible through convergence between Manrega, Campa, Fund and other sources. Amrit Dharohar. Wetlands are vital ecosystems which sustain biological diversity. In his latest Man Ki Baat, the Prime Minister said, now, I quote, now the total number of Ramsar sites in our country has increased to 75, whereas before 2014, there were only 26, unquote. Local communities have always been at the forefront of conservation efforts. The government will promote their unique conservation values through Amrit Dharohar, a scheme that will be implemented over the next 3 years
to encourage optimal use of wetlands and enhance biodiversity, carbon stock, ecotourism opportunities, and income generation for local communities. Coastal shipping. Coastal shipping will be promoted as the energy efficient and lower cost mode of transport, both for passengers and freight, through PPP mode with viability gap funding. Vehicle replacement. Vehicle replacement is an important continuing policy, replacing the old political, replacing, absolutely, thank you. Replacing old polluting vehicles. May be applicable, right? Replacing old polluting vehicles is an important part of greening our economy. In furtherance of the vehicle scrapping policy mentioned in Budget 21-22, I have allocated adequate funds to scrap old vehicles of the central government. States will also be supported in replacing old vehicles and old state ambulances. Honourable Speaker, sir, I move to priority 6, youth power. To empower our youth and help the Amrit PD realize their dreams, we have formulated the National Education Policy, which is very wide in its scope, but one of the things is also to focus on skilling, adopted economic policies that facilitate job creation at scale and have supported business opportunities. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 will be launched to skill lakhs of youth within the next 3 years. On-job training, industry partnership, and alignment of courses with needs of industry will be emphasized. The scheme will also cover new age courses for Industry 4.0 like coding, AI, robotics, mechatronics, IoT, 3D printing, drones, and other soft skills. To skill youth for international opportunities, 30 Skill India international centers will be set up across different states. The digital ecosystem for skilling will be further expanded with the launch of a unified Skill India digital platform for enabling demand-based formal skilling, linking with employers including MSMEs, and facilitating access to entrepreneurship schemes. To provide stipend support to 47 lakh youths in 3 years, direct benefit transfer under a pan-India national apprenticeship promotion scheme will be rolled out. Tourism. Honourable Speaker, sir, with an integrated and innovative approach, at least 50 destinations will be selected through challenge mode. In addition to aspects such as physical connectivity, virtual connectivity, tourist guides, high standards for food streets, and tourist security, all the relevant aspects would be made available on an app to enhance tourist experience. Every destination would be developed as a complete package. The focus of development of tourism would be on domestic as well as foreign tourists. Sector-specific skilling and entrepreneurship development will be dovetailed to achieve the objectives of Dekho Apna Desh initiative. This was launched as an appeal by the Honourable Prime Minister to the middle class to prefer domestic tourism over international tourism. The integrated development of theme-based tourist circuits, the Swadesh Darshan scheme, was also launched. Under the Vibrant Villages program, tourism infrastructure
and amenities will be facilitated in border villages. Unity Mall. States will be encouraged to set up a Unity Mall in their state capital or most prominent tourism center or the financial capital for promotion and sale of their one district, one product and GI products and other handicraft products, and for providing space for such products of all other states as well. Sir, priority number 7, financial sector. Our reforms in the financial sector and innovative use of technology have led to financial inclusion at scale, better and faster service delivery, ease of access to credit, and participation in financial markets. This budget proposes to further these measures. Credit guarantee for MSMEs. Last year, I proposed revamping of the credit guarantee scheme for the MSMEs. I am happy to announce that the revamped scheme will take effect from 1st April 2023 through infusion of 9,000 crores in the corpus. This will enable additional collateral-free guaranteed credit of 2 lakh crores of rupees. Further, the cost of credit will be reduced by about 1%. A national financial information registry will be set up to serve as a central repository of financial and ancillary information. This will facilitate efficient flow of credit, promote financial inclusion, and foster financial stability. A new legislative framework will govern this credit public infrastructure and will be designed in consultation with the RBI. To meet the needs of Amrit Kal and to facilitate optimum regulation in the financial sector, public consultation, as necessary and feasible, will be brought to the process of regulation making and issuing subsidiary directions. To simplify, to ease, and to reduce cost of compliance, financial sector regulators will be requested to carry out a comprehensive review of existing regulations. For this, they will consider suggestions from public and regulated entities. Time limits to decide the application under various regulations will also be laid down. Honourable Speaker, sir, to enhance business activities in GIFT IFSC, the following measures will be taken. Delegating powers under the SEZ Act to the IFSCA to avoid dual regulation. Setting up a single window IT system for registration and approval of IFSCA, SEZ authorities, GSTN, RBI, SEBI, and IRDAI. Permitting acquisition financing by IFSC banking units of foreign banks. Establishing a subsidiary of Exim Bank for trade refinancing. Amending IFSCA Act for statutory provisions for arbitration, ancillary services, and avoiding dual regulation under the SEZ Act, and recognizing offshore derivative instruments as valid contracts. Honourable Speaker, sir, data embassy. For countries looking for digital continuity solutions, we will facilitate setting up of their data embassies in GIFT IFSC. Improving governance and investor protection in banking sector. To improve bank governance and enhance investors' protection, certain amendments to the Banking Regulation Act, the Banking Companies Act, and the Reserve Bank of India Act are being proposed. Capacity building in securities market. Honourable Speaker, sir, to build capacity of functionaries,
and professionals in the securities market, SEBI will be empowered to develop, regulate, maintain, and enforce norms and standards for education in the National Institute of Securities Markets and to recognize award of degrees, diplomas, and certificates. A central processing center will be set up for faster response to companies through centralized handling of various forms filed with field officers under the Companies Act. Reclaiming of shares and dividends. For investors to reclaim unclaimed shares and unpaid dividends from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, an integrated IT portal will be established. Digital payments continue to find wide acceptance. In 2022, they show an increase of 76% in transaction and 91% in value. Fiscal support for this digital public infrastructure will continue in 2023-2024. आजादी का अमृत महोत्सव, महिला सम्मान बचत पत्र. For commemorating Azadi Ka Amrit Mahotsav, a one-time new small savings scheme, Mahila Samman Savings Patra or Savings Certificate, Mahila Samman Savings Certificate will be made available for a 2-year period up to March 2025. This will offer deposit facility up to 2 lakh in the name of a woman or girls for a tenure of 2 years at fixed interest rate of 7.5% with partial withdrawal option. Senior citizens. The maximum deposit limit for senior citizens savings scheme will be enhanced from 15 lakh to 30 lakhs of rupees. The maximum deposit limit for monthly income account scheme will be enhanced from 4.5 lakh to 9 lakh for single account and from 9 lakh to 15 lakh for joint account. Honorable Speaker, sir, fiscal management. 50 years interest-free loan to states. The entire 50-year loan to states has to be spent on capital expenditure within 2023-24. Most of this will be at the discretion of the states, but a part will be conditional on states increasing their actual capital expenditure. Parts of the outlay will also be linked to or allocated for the following purposes: scrapping old government vehicles, urban planning reforms and actions, financing reforms in urban local bodies to make them credit-worthy for municipal bonds, housing for police personnel above or as part of the police station, constructing unity malls, children and adolescent libraries and digital infrastructure, and state share of capital expenditure of central schemes. Honorable Speaker, sir, fiscal deficit of states. States will be allowed a fiscal deficit of 3.5% of GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms. Revised estimates 2022 to 2023. The revised estimate, Honorable Speaker, sir, of the total receipts other than borrowing is 24.3 lakh crores, of which the net tax receipts are 20.9 lakh crores. The revised estimate of the total expenditure is 41.9 lakh crores of rupees, of which the capital expenditure is about 7.3 lakh crores.
The revised estimate of the fiscal deficit is 6.4% of GDP, adhering to the budget estimate. So budget estimates of 2023-24. Coming to 2023-24, the total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at 27.2 lakh crores and 45 lakh crores respectively. The net tax receipts are estimated at 23.3 lakh crores. The fiscal deficit is estimated to be 5.9% of the GDP. In my budget speech for 21-22, I had announced that we plan to continue the path of fiscal consolidation, reaching a fiscal deficit of below 4.5% by 2025-26, with a fairly steady decline over the period. We have adhered to this path, and I reiterate my intention to bring the fiscal deficit below 4.5% of GDP by 2025-26. To finance the fiscal deficit in 2023-24, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.8 lakh crores. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 15.43 lakh crores of rupees. Honorable Speaker, sir, I now move to Part B. Indirect taxes. My indirect tax proposals will aim to promote exports, boost domestic manufacturing, enhance domestic value addition, encourage green energy and mobility. A simplified tax structure with fewer tax rates helps in reducing compliance burden and improving tax administration. I propose to reduce the number of basic customs duty rates on goods other than textiles and agriculture from 21 to 13. As a result, there are minor changes in the basic custom duties, cesses and surcharges on some items including toys, bicycle, automobiles and naphtha. Green mobility. To avoid cascading of taxes on blended compressed natural gas, I propose to exempt excise duty on GST paid compressed biogas contained in it. To further provide impetus to green mobility, customs duty exemptions is being extended to import of capital goods and machinery required for manufacture of lithium-ion cells for batteries used in electrical vehicles as well. Electronics. As a result of various initiatives of the government, including phased manufacturing program, mobile phone production in India has increased from 5.8 crore units valued at about 18,900 crore in 2014-15 to 31 crore units valued at 2,75,000 crore in the last financial year. To further deepen domestic value addition in manufacturing of mobile phones, I propose to provide relief to customs duty. I propose to provide relief in customs duty on import of certain parts and inputs like camera lens and continue the concessional duty on lithium-ion cells for batteries for another year. Similarly, to promote value addition in manufacture of televisions, I propose to reduce the basic customs duty on parts of open cells of TV panels to 2.5%. Electrical. To rectify inversion of duty structure and encourage manufacturing of electric kitchen chimneys, the basic custom duty on electric kitchen chimney is being increased from 7.5% to 15%, and that on heat coils for these is proposed to be reduced from 20% to 15%. Chemicals and petrochemicals. Denatured ethyl
alcohol is used in chemical industry. I propose to exempt basic customs duty on it. This will also support the ethanol blending program and facilitate an endeavour for energy transition. Basic customs duty is also being reduced on acid-grade fluorospar from 5% to 2.5% to make the domestic fluorochemicals industry competitive. Further, the basic customs duty on crude glycerine for use in manufacture of epichlorohydrin is proposed to be reduced from 7.5% to 2.5%. Marine products. In the last financial year, marine products recorded the highest export growth, benefiting farmers in the coastal states of the country. To further enhance the export competitiveness of marine products, particularly shrimps, duty is being reduced on key inputs for domestic manufacture of shrimp feed. India is a global leader, as I said in Part A, in cutting and polishing of natural diamonds, contributing about 3/4 of the global turnover by value. With the depletion of deposits of natural diamonds, the industry is moving towards lab-grown diamonds, and it holds huge promise. To seize this opportunity, I propose to reduce the basic customs duty on seeds used in their manufacture. Custom duties on door or doré and bars of gold and platinum were increased earlier this fiscal. I propose to increase the duties on articles made therefrom to enhance the duty differential. I also propose to increase the import duty on silver doors, bars and articles to align them with that on gold and platinum. To facilitate availability of raw materials for the steel sector, exemptions from basic custom duty on raw materials for manufacture of CRGO steel, ferrous scrap and nickel cathode is being continued. Similarly, the concessional BCD of 2.5% on copper scrap is also being continued to ensure the availability of raw materials for secondary copper producers who are mainly in the MSME sectors. Compounded rubber. The basic custom duty rate on compounded rubber is being increased from 10% to 25% or 30 kg, whichever is lower, at par with that of natural rubber other than latex, to curb circumvention of duty. Cigarettes. National calamity contingent duty on specified cigarettes was last revised 3 years ago. This is proposed to be revised upwards by about 16%. Direct taxes. I now come to my direct tax proposals. Honourable Speaker, these proposals aim to maintain continuity and stability of taxation, further simplify and rationalise various provisions to reduce the compliance burden, promote the entrepreneurial spirit and provide tax relief to citizens. It has been constant endeavour of the Income Tax Department to improve taxpayers' services by making compliance easy and smooth. Our taxpayers portal received a maximum of 72 lakh returns in a day, processed more than 6.5 crore returns this year. Average processing period reduced from 93 days in financial year 13-14 to 16 days only now. And 45% of the returns were processed within 24 hours. We intend to further improve this, roll out the next generation common IT return form for taxpayer convenience, and also plan to strengthen the grievance redressal mechanism. MSMEs and professionals. MSMEs are growth engines of our economy. Micro enterprises with turnover up to 2 crore of rupees and certain professionals with turnover of up to 50 lakh rupees can avail the benefit of presumptive taxation. I propose to provide enhanced limits of 3 crore and 75 lakh respectively to the taxpayers whose cash receipts are no more than 5%. Whose cash
receipts are no more than 5%. Moreover, to support MSMEs in timely receipt of payments, I propose to allow deduction for expenditure incurred on payments made to them only when payment is actually made. Cooperation. Cooperation is a value to be cherished. In realizing our Prime Minister's goal for Sehkar Se Samriddhi and his resolve to connect the spirit of cooperation with the spirit of Amrit Kal, in addition to the measures proposed in Part A, I have a slew of proposals for the cooperation sector. First, new cooperatives that commence manufacturing activities till 2024, 31st March, shall get the benefit of a lower tax rate of 15%, as is presently available to new manufacturing companies. Secondly, I propose to provide an opportunity to sugar cooperatives to claim payments made to sugarcane farmers for the period prior to the assessment year 2016-17 as expenditure. This is expected to provide them a relief of almost 10,000 crores. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agriculture and rural development banks. I repeat that. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to and loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agricultural and rural development banks. Similarly, a higher limit of 3 crore for TDS on cash withdrawal is being provided to cooperative societies. Startups. Entrepreneurship is vital for a country's economic development. We have taken a number of measures for startups and they have borne results. India is now the third largest ecosystem for startups globally and ranks second in innovation quality among middle-income countries. I propose to extend the date of incorporation for income tax benefits to startups from 31/3/2023 to 31/3/2024. I further propose to provide the benefit of carry forward of losses on change of shareholding of startups from 7 years of incorporation to 10 years. To reduce the pendency of appeals at commissioner level, I propose to deploy about 100 joint commissioners for disposal of small appeals. We shall also be more selective in taking up cases for scrutiny of returns already received this year. Better targeting of tax concessions. For better targeting of tax concessions and exemptions, I propose to cap deduction from capital gains on investment in residential house under Section 54 and Section 54F to 10 crores. Another proposal with similar intent is to limit income tax exemption from proceeds of insurance policies with very high value. Rationalization. Honourable Speaker, sir, there are a number of proposals relating to rationalization and simplification. Income of authorities, boards and commissions set up by statutes of union or state for the purpose of housing, development of cities, towns and villages, and regulating and developing an activity or matter is proposed to be exempted from income tax. Other major measures in this direction are removing the minimum threshold of 10,000 for TDS and clarifying taxability relating to online gaming, not treating conversion of gold into electronic gold receipts and vice versa as capital gains, reducing the TDS rate from 30% to 20%
on taxable portion of EPF withdrawals in non-PAN cases and taxation on income for market-linked debentures. Other major proposals in the finance bill relate to the following: extension of period of tax benefits to funds relocating to IFSC, GIFT City till 31/3/2025, decriminalization under Section 276A of the Income Tax Act, allowing carry forward of losses on strategic disinvestment, including that of IDBI Bank, and providing EEE status to Agnivir Fund. Personal income tax. Now I come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle-class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil; 3 to 6 lakhs, 5%; 6 to 9 lakhs, 10%; 9 to 12 lakh, 15%; 12 to 15 lakhs, 20%; and above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. My fourth announcement in personal income tax is regarding the highest tax rate, which in our country is 42.74%. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge rate
from 37% to 25% in the new tax regime. This would result in reduction of the maximum rate. This would result in the reduction of the maximum tax rate to 39%. Lastly, the limit of 3 lakh rupees for tax exemption on leave encashment on retirement of non-government salaried employees was last fixed in the year 2002, when the highest basic pay in the government was only 30,000 rupees per month. In line with the increase in the government salaries, I am proposing to increase this limit to 25 lakh rupees. We are also making the new income tax regime as the default tax regime. However, citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 38,000 crore to 37,000 crore in direct taxes and rupees 1,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 3,000 crore will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 35,000 crores annually. Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this August House. One hour, 25 minutes. आइटम नंबर 1 माननीय आइटम नंबर 2 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी. Sir, with your permission, I lay on the table of the following statements. Under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility Budget Management Act 2003, 1. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई गई है. आप बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन पलक से ले लें. आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसकी प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी. आइटम नंबर 3 माननीय मंत्री जी, वित्त मंत्री जी. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2023. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें. Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 2 फरवरी 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. नमस्कार. बजेट 2023-24 को स्वागत करुच्ची मु प्रेमदा दशबंधु. आप देखुले आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जो भाव में आज बजेट उपस्थापन करिसेंती. चलित वर्षर ये हूँ आर्थिक बजेट जहाँ उपस्थापन होती जहाँ कहुच्छी सबु वर्गर
को गुरुत्व दि जाइछि समाज रो सबु क्षेत्र को गुरुत्व दि जाइथिबा कुआ जाउछि जा सामना को आसुछि ये होछि 7टी कैटेगरी मध्य करा जाइछि 7टी स्तंभ एथरक करा जाइछि जो भली भाबरे सामग्रिक विकास कथा कहि परिबा समूह विकास युव शक्ति एभली अनेक कथा वर्तमान कुआ जाइछि सामना को आसुछि ये जो बजेट कोठी ना कोठी मध्यवित्त को 15 लाख रु अधिक एथरक आयकर जदि देखिबा स्लैब रे मध्य परिवर्तन आसीछि अनेक क्षेत्र में मध्य परिवर्तन आसीथिबा कुआ जाउछि आयकर रिहाती 7 लाख जाय वृद्धि करा जाइछि 47 लाख युववर्ग को 3 वर्ष जाय भत्ता दिया जिवो अनेक क्षेत्र में वर्तमान जहाँ आसुची कि खबर आसुची कि बजेट उपस्थापन हो सारी 2023-24 ये हूँ आर्थिक वर्षर बजेट 2070 सुधा शून्य कार्बन लक्ष्य रखा जाइछि एवं अनेक क्षेत्र में जो हिसाब किताब 2023-24 स्वास्थ्य क्षेत्र में देश में आईसीएमआर लैब संख्या मध्य बढ़िबो निर्मला सीतारमण ए सूचना देइछंती 2047 भितर एनएमआर मध्य गठन करा जिवो देश में प्रतिष्ठा हेबो 57टी नर्सिंग कॉलेज एभली जदि देखिबा स्वास्थ्य क्षेत्र में ये एक बड़ पदक्षेप कुआ जाउची रेलवे क्षेत्र में देखिबा रेलवे नुआ योजना पाई मध्य योजना करा जाइछि रेलवे रे 100 प्रमुख योजना चिन्हट होइछि रेलवे रे घरोई सहभागिता रहिबो एथरक या सहित किभली भाबरे अनेक क्षेत्र में मध्य गुरुत्व दिया जाइछि सब क्षेत्र में शहरी भित्तिभूमि पाई वार्षिक 10,000 कोटी मध्य करा जाइछि किंतु महंगा सुना हबो बोली कुहा जाउछि ये जो बजेट आसीछि गरीब कैदी को जमीन पाई केंद्र एथरक सहायता देव ए बजेट रे घोषणा करा जाइछि या सहित जहाँ खबर आसी पहुंचुछि कि 5G रो विकास पाई प्रतिष्ठा हेबो 100टी रिसर्च लैब ये बजेट मध्य बेस गुरुत्व बहन करुछि काहेकि ना जेहेतु आगु को निर्वाचन आसुछि एवं ता पूर्व ये चलित वर्षर जो आर्थिक बजेट रही कोटी ना कोटी बेस गुरुत्व बहन करुछि सेतिपई सबु क्षेत्र को गुरुत्व दिया जाउथबा कुआ जाइछि केंद्र सरकार कर जो बजेट आसीछि कोठी ना कोटी मध्यवित्त को आयकर रे गोटे बड़ आश्वस्ति मिलिछि बोली कहि परिबा काहेकि ना 7 लाख जो 5 लाख रहितला आयकर स्लैबटा 7 लाख को वृद्धि करा जाइछि एवं आयकर छाड़ सीमा 2.5 लाख रु बढ़ी 3 लाख होइछि काइना पूर्व 2.5 लाख रहितला एबे यहा 3 लाख रे पहुंचिछि वार्षिक 3 लाख जाय आयकर करुथिले देबाकू पड़िबनी आयकर एथरक जहाँ कुआ जाइछि ई होछि खबर आसी पहुंचुछि एवं 3 रु 6 लाख जाए आय उपरे 5% टिकस देबाकू पड़िबो एभଳି एक सूचना मध्य निर्मला सीतारमण देथिबा जहाँ सूचना आसी पहुंचुछि किंतु ये जहाँ खबर आसी पहुंचुछि मु ग्राफिक्स माध्यम रे चाहिए पीसीआर टीम को अनुरोध करबी जो खबर आसी पहुंचुछि कि 2047 सुधा एनएमआर मूलोत्पाटन लक्ष्य मध्य रखा जाइछि जेहेतु कोविड महामारी जेतेबेले प्रथमे बजेट उपस्थापना करागला सेतेबेले मध्य कुआ जाउथिला कोविड महामारी को किभली भाबरे देश मुकाबला करिथिला एवं किभली लोकों को सुरक्षित भाबरे टीका दिया जाइथिला ये खबर आसी पहुंचतिला किंतु ये जो बजेट आसुछि पढ़ा पाई मध्य राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी हम बयस अनुसार एथरक मिल बही शिक्षा क्षेत्र में जहाँ गुरुत्व दि जाइछि पंचायत स्तर में खोल पुस्तकालय ये खबर आसी पहुंचुछि अनेक कथा जहाँ सामना को आसुछि सबुठु बड़ कथा होछि सबु वर्ग को एथरक नजर रखा जाइछि एवं बड़ कथा होछि जो खबर जो मध्यवित्त को गोटे बड़ आश्वस्ति मिली कहि परिबा मध्यवित्त ये आश्वस्ति कहीं आयकर सीमा जो छाड़ करा जाइछि आदिवासी 15,000 कोटी गरीब कैदी जमीन पाई मिलिबो सहायता आवास योजना रे 66% खर्च वृद्धि करा जिवो खर्च हेबो 79,000 कोटी कर्नाटक मरुड़ी पाई 5,300 कोटी धार्य करा जाइछि ये जो बजेट रहितला नुआ योजना जहाँ सामना को आसुछि जदि कृषि बजेट कथा आलोचना करबा कृषि बजेट पाई पनीपरिबा चाष पाई 2200 कोटी टंका ग्रीन ग्रोथ को मिली प्राथमिकता कृषकों स्वतंत्र फंड रो व्यवस्था होइछि ये होछि बजेट एवं भित्तिभूमि कथा जदि आमे आलोचना करबा शहरी भित्तिभूमि रो विकास पाई वार्षिक 10,000 कोटी रो योजना करा जाइछि या सहित परिवहन क्षेत्र पाई 75,000 कोटी मध्य बजेट रहिछि एवं प्रथमे देखिबा कि कौन आसुछि शिक्षा पाई बजेट रे कौन आसुछि तापरे नजर पकेबा कहीं ना शिक्षा क्षेत्र रे
निर्मला सीतारमण कौन गुरुत्व देइछंती पढ़ा पाई राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी कराजिबो ये निर्मला सीतारमण एथर कहिसंती एवं बयस अनुसार एथरक मिलिबो बही शिक्षा क्षेत्र पाई ये आसीची बजेट रे उपस्थापन करा जायछि पंचायत स्तर रे खोला जिवो पुस्तकालय पंचायत स्तर रे किबळी भाबरे पिलामानकु मध्य सुविधा मिली पारिबो से नै मध्य नजर रखा जायछि तापरे एकलव्य स्कूल पाई नियुक्त हेबे 38,800 शिक्षकों को किभली भाव में नियुक्ति दिया तापरे गुरुत्व दिया जायछि लिटरेसी पाई सहायक हेबे एनजीओ एवं आदिवासी खोलिबो नुआ स्कूल ये शिक्षा क्षेत्र पाई बजेट रे व्यवस्था होइथिबा जणा पड़िछि या परे रखिबा स्वास्थ्य क्षेत्र रे मध्य कोन गुरुत्व दैछंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण स्वास्थ्य क्षेत्र जदि आमे आलोचना करबा बजेट रे स्वास्थ्य क्षेत्र पाई कौन मिली तेबे खोलिबो नुआ मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज पाखापाखि 157टी नूतन नर्सिंग कॉलेज खोलाजिबो बोली निर्मला सीतारमण जा कहिसंती एवं आईसीएमआर लैब मध्य बढ़ाजिबो ता सहित 2047 सुधा एनिमियार मूलात्पोटन रो लक्ष्य मध्य रखा जायछि ये स्वास्थ्य क्षेत्र पाई ये बजेट उपस्थापन करा जायछि जा स्वास्थ्य क्षेत्र प्रति इभଳି गुरुत्व दिया जायछि एबे रेलवे ऊपर को जदि आमे आलोचना करबा रेलवे क्षेत्र रे कोन आसीछि काकि ना सब बेले रेलवे क्षेत्र रे बजेट कोन आसे सेथि पई कुहा जे तेबे रेलवे पई 2.4 लाख कोटी रो एथरक बजेट होइछि या सहित नुआ योजना पई धार्य होइछि 75,000 कोटी विकास पई 100 प्रमुख योजना चिन्हट करा जायछि एथर रेलवे रे रहिबो घरोई सहभागिता ये रेलवे पाई जहाँ बजेट उपस्थापन करा जायछि ये होछि रेलवे पाई एवं 2.4 लाख कोटी रो बजेट एथर रेलवे पाई रहिछि या परे आमे नजर पकेबा कोन सबु नुआ योजना एथर कासेछि चलित वर्ष जो आर्थिक बजेट कथा कुआ जाउछि कोन नुआ योजना आसीछि नुआ योजना रे रहिछि आदिवासी को विकास पाई 15,000 कोटी एथर को दिया जिवो काइना गरीब कैदी को जमीन पाई मध्य मिलिबो सहायता आवास योजना रे 66% खर्च वृद्धि करा जिवो जदि एई खर्च बढ़ी बढ़ी 79,000 कोटी होइछि या सहित कर्नाटक रो मरुडी पाई 5,300 कोटी धार्य करा जायथिबा बजेट रे कुहा जायछि ये होछि नुआ योजना जा कुहा जायछि आदिवासी को विकास पाई मध्य कोठी ना कोठी बजेट रे गुरुत्व दिया जायछि तापरे जदि कृषि क्षेत्र कथा आलोचना करबा कृषि होची कृषि बजेट रे जहाँ आसुची कि पनीपरिबा चाष पाई 22 कोटी टंका एवं ग्रीन ग्रोथ जहाँ कुआ जाउची ताकू मध्य एथरक प्राथमिकता मिलिची कृषकों पाई स्वतंत्र फंड रो व्यवस्था करा जायछि ये तमाम वर्तमान आसुची विभिन्न क्षेत्र पाई ये जहाँ आसुची खबर एवं सबु क्षेत्र को गुरुत्व दिया जायछि जे देखिबा महिलांक क्षेत्र रे गुरुत्व दिया जायछि युवा वर्गंक क्षेत्र रे गुरुत्व दिया जायछि या बाद जो सामग्रिक विकास कथा कुआ जाउछि समूह विकास युवा शक्ति एभली 7टी स्तंभ एथरक करा जायछि जहाँ बजेट रे जहाँ स्थान पाइछि यारी भितरे सबुठ बड़ कथा होची आयकर विभाग जो छाड़ करा जायछि कोटी ना कोटी मध्यवित्तंक पई ये गोटे बड़ आश्वस्ति बोली कहि परिबा समस्त कर नजर रहितला कोन आसीबो बजेट रे किभली गुरुत्व दिया जिवो एवं जा कुआ जाउछि नजर पकेबा कृषि क्षेत्र कथा आउथरे आलोचना करबा कृषि क्षेत्र रे कोन गुरुत्व दिया जायछि तेबे पनीपरिबा चाष पई 2200 कोटी टंका करा जायथिबा जणा पड़िछि एवं ग्रीन ग्रोथ को मिलिछि प्राथमिकता एथरक कृषि बजेट रे ग्रीन ग्रोथ को गुरुत्व दिया जायथिबा देखिबा को मिलिछि यहाँ परे कृषकों पाई स्वतंत्र फंड रो व्यवस्था मध्य करा जायछि कृषि क्षेत्र रे गुरुत्व दिया जायछि एथि पई कुहा जाउथला कृषि क्षेत्र प्रति एथरक बेस गुरुत्व काहेकिना जेहेतु आगु को निर्वाचन आसुची एवं ता पूर्वरु ये बजेट कोठी ना कोठी बेस गुरुत्व बहन करुची ये चलित वर्षर जो आर्थिक बजेट आसीची पीएम आवास योजना खर्च मध्य 79,000 कोटी रखा जायथिबा जणा पड़िची या सहित ये जो हिसाब किताब वर्तमान आसीची 2023-24 रे नुआ योजना मध्य केतेरा स्थान पाइची कर्नाटक मरुडी पाई मध्य 5,300 कोटी एथरक स्थान पाइथिबा जणा पड़िची ये बजेट रो जा रूपरेख आसीची कि पाखापाखि ये बजेट कोटी ना कोटी सबु वर्गक पाई करा जायथिबा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जा ए बजेट उपस्थापन करिसेंती
एवं ये सब क्षेत्र में कोठी ना कोठी गुरुत्व बेस दिया जाउची जा पूर्व आमे कहूतिले कि कृषि क्षेत्र हो युववर्गों हो स्वास्थ्य क्षेत्र में हो विभिन्न क्षेत्र में आसी जलवायु संरक्षण पई मध्य जो करा जायछि एमएसएमई पई स्वतंत्र पैकेज कुआ जाउतला एमएसएमई पई कोन दिया जिवो कोन पैकेज कोन करा जिवो सेति पई कि स्वतंत्र पैकेज मध्य घोषणा कराइछि 2070 सुधा शून्य कार्बन लक्ष्य रखा जायछि एथरक एवं जो बजेट उपस्थापन करा जायछि बीएम कौशल योजना 4.0 मध्य रखा जायछि 47 लाख युववर्ग को 3 वर्ष जाए भत्ता दिया जिवो ये नुआ योजना वर्तमान सामिल करा जायछि युववर्ग को विश्वस्तरीय तालीम किभଳି भाबरे दिया जिवो युववर्ग किभଳି आगु को बढ़िबे सेति पई कुआ जायछि ये 47 लाख युववर्ग को 3 वर्ष जाए भत्ता दिया जिवो ये एक नुआ योजना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण करिथिबा देखिबाकू मिलिछि युववर्ग को किभଳି भाबरे विश्व स्तर रे पहुंचा जाय परिबो एवं एक जिला एक उत्पाद को मध्य प्रोत्साहन दिया जिवो बोली अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कहिथिबा देखिबाकू मिलिछि ये बजेट रे आयकर रिहाती कथा कहि परिबा 7 लाख जाय वृद्धि करा जायछि 47 लाख युववर्ग को 3 वर्ष भत्ता दिया जिवो रेलवे पई 2.4 लाख मध्य रहिथिबा कुआ जायछि एवं टैक्स कथा देखिबा बढ़िला आयकर जो समय सीमा रहितला ता बढ़ितिबा वर्तमान जहाँ सूचना आसी पहुंचुची मध्यवित्त को कोठी ना कोठी आश्वस्ति मिली 5 रु 7 लाख को वृद्धि होइथिबा घोषणा करिसेंती निर्मला सीतारमण ये खबर आसी पहुंचुची 5 लाख पूर्व रहितला ता वर्तमान 7 लाख को वृद्धि करा जायछि 3 लाख पर्यंत वार्षिक आय पई आयकर शून्य रहिछि काइना पूर्व जोटा 2.5 लाख थिला एटा वर्तमान 3 लाख करा जायछि 3 लाख पर्यंत शून्य करा जायछि 3 रु 6 लाख पई आय पई टिकस रहइबो 5%। ये सूचना से पहुंचुची कि 3 रु 6 लाख जो माने आय करछंती से माने 5% टिकस देबे 7 रु 9 लाख आय पई मिलिबो 10% टिकस रखा जायछि एथरक एवं सबुठ बड़ कथा होची 7 लाख पर्यंत आयकर जो समय सीमा रहितला ताकू वृद्धि कराई जायछि ये चलित वर्ष जो बजेट रे मध्यवित्त को कोठी ना कोठी सामान्य आश्वस्ति मिलिथिबा कुआ जाउछि प्रधानमंत्री आवास योजना कथा कहि परिबा एवं मागणा जाए जो अन्न योजना वर्षे किभଳି भाबरे दिया जिवो से ने मध्य निर्मला सीतारमण कहिथिबा देखिबाकू मिलिछि 63,157 नुआ नर्सिंग कॉलेज मध्य थर खोला जिवो जदि स्वास्थ्य क्षेत्र कथा आलोचना करिबा स्वास्थ्य क्षेत्र रे मध्य गुरुत्व दिया जायछि विभिन्न योजना नुआ योजना मध्य करा जायछि चिकित्सा क्षेत्र रे घरे उत्पादन मेडिकल उपकरण तैयारी कोर्स मध्य आरंभ करा जिवो सीतारमण एभली कहिसेंती 500 आकांक्षी ब्लॉक चिन्हट करा जिवो 2047 सुधा एनमिआर जो मूलोत्पाटन करा जिवो गठन एवं समवाय मंत्रालय एभली एक सूचना मध्य देइछंती जा खबर आसी पहुंचुची इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री रे मध्य अनेक जिनिस सस्ता हेबो बोली कुआ जाउची अनेक किछि महंगा हेबो बोली कुआ जाउची ये जो पूरा बजेट सामना को आसीची कोन सस्ता अनेक किछि सस्ता अनेक किछि महंगा मध्य कुआ जाउची तार भितरे जो 2023-24 आर्थिक वर्ष पई केंद्र सरकार जो बजेट उपस्थापन बजेट आनिछंते एवं केंद्र जो बजेट उपस्थापन होईची समस्त पथरे ये मध्य प्रश्न आसुथिबो कोन महंगा होची कोन सस्ता होची जदि हमें सस्ता कथा आलोचना करबा कोठी ना कोठी स्वदेशी मोबाइल इलेक्ट्रिक जान कैमरा लेंस एवं खेलना साइकिल ए सबु सस्ता हेबो बोली कुआ जाउची एवं महंगा कथा जदि आलोचना करबा स्वदेशी किचन चिमिन ये महंगा हेबो सुना मध्य महंगा हेबो रूपा महंगा हेबो प्लाटिनम महंगा हेबो इंपोर्टेड डोर जोरा रहिची सी महंगा हेबो एवं सिगरेट महंगा हेबो ये वर्तमान आसुची जहा सस्ता एवं महंगा भितर कहि परबा ये आसुची सस्ता एवं महंगा अन्यपटे जनजाति संप्रदाय को मध्य गुरुत्व दिया जायछि 15,000 कोटी टंका व्यय पीबीटीजी विकास मिशन योजना आरंभ हेबो जनजाति विकास पई गुरुत्व दिया जायतिबा देखिबाकू मिलिछि देश रे खोलिबो 57 नुआ नर्सिंग कॉलेज आगामी 3 वर्ष रे एकलव्य स्कूल रे 38,800 शिक्षक नियुक्ति हेबे पीएमजेकेएवाई पई 2 लाख टंकार आवंटन करा जिवो कृषि क्षेत्र रे मध्य गुरुत्व दिया जायछि कृषि क्षेत्र पई कृषि स्टार्टअप खोलिबा को स्थापित हेबो एएएफ ये मध्य बजेट रे जा स्थान पाइछि एवं रेलवे बजेट कथा जदि आमे आलोचना करिबा ये चलित वर्षर जो साधारण बजेट आर्थिक वर्षर जो बजेट कथा कुआ जाउछि रेलवे पाई
4 लाख कोटी टंकार बजेट एथर घोषणा करा जायछि। रेलवे रे नुआ योजना पाई 75,000 कोटी टंका रखा जायछि। सेपरि 50टी अतिरिक्त विमान बंदर एवं एयरस्ट्रिप रो पुनरुद्धार करा जिवो। यह सहित आदिवासी विकास पाई 15,000 कोटी एवं प्रधानमंत्री आवास रे खर्च हेबो 79,000 कोटी टंका। ये वर्तमान खबर आसी पहुंचुची बजेट रे महिला चाषी हुंतु पछुआ वर्ग हुंतु समस्त को ध्यान दिया जायछि, समस्त को गुरुत्व दिया जायछि। तेणुक सबु वर्ग को ध्यान रखा जाई ए बजेट उपस्थापन करा जायतिबा निर्मला सीतारमण कहचंती। भारतीय अर्थव्यवस्था एबे सबुठु द्रुत अभिवृद्धिर अर्थव्यवस्था पलटिछि। कोरोना जो भली भाबरे आसीथिला ता भितरे सठिक रास्ता रे रहिछि भारतीय अर्थव्यवस्था। तेबे परिवहन क्षेत्र में कौन आसी नजर पकेबा। परिवहन क्षेत्र पाई 75,000 कोटी एथरक रखा जायछि। ये होछि परिवहन क्षेत्र उपरे मध्य गुरुत्व दिया जायछि। परिवहन क्षेत्र पाई 75,000 कोटी टंका निर्मला सीतारमण रखिथिबा जा सूचना देइछंती एवं भित्तिभूमि पाई वार्षिक 10,000 कोटी योजना मध्य करा जायछि। शहरी भित्तिभूमि पाई वार्षिक 10,000 कोटी योजना करा जायतिबा वर्तमान जना पड़िछि। ये होछि बजेट 2023-24 परिवहन क्षेत्र में गुरुत्व दिया जायछि एवं परिवहन विभाग पाई योजना मध्य करा जायछि। तारि भितरे जहा कुआ जाउछि जो भली भाबरे कोरोना आसीथिला, कोरोना भितरे कि भली भाबरे सठिक पदक्षेप निया जायतिला, गोटे चैलेंज रहिथिला देश पाई एवं ए चैलेंज को मध्य सामना करा जायतिला। भारत याको सामना करथिला। जहाँ कुआ जायछि जो पदक्षेप निया जायतिला, केंद्र सरकार जो पदक्षेप नेथिले पाखापाखि कोरोना काल रे 80 कोटी लोकों को मागणा रे चाउल जोगाई दिया जायछि एवं सबका साथ सबका विकास कथा जहाँ कुआ जाउथिला ता मध्य कोटी ना कोटी बेस गुरुत्व दिया। तेबे ए संपर्क में अधिक आलोचना करबा आम सहित फोन लाइन रहिछंती ओडिशा इकोनॉमिक फोरम रो सभापति विश्वदेव दास आम सहित जोड़िछंती। श्रीजुक्त दास आपन को स्वागत करूछि न्यूज 8 ओडिया को। श्रीजुक्त दास वर्तमान जो चलित वर्षर आर्थिक बजेट उपस्थापन हो जायछि ए बजेट को पूरा पूरी आपन किभଳି देखुछंती रूपरेख को? गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर किछि करिवे किंबा हमर प्राइस राइज ऊपर किछि करिवे। प्राइस राइज ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर कोन सी सरकार आसले किछि करिवे। बाय प्रोडक्ट ऑफ आवर टेक्नोलॉजी ये वर्तमान आमे जो मात्रा रे माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिजनेस इंटेलिजेंस यूज करूछे आज्ञा वर्तमान कोन सी कंपनी रे आपनकर लोकंकर आवश्यकता नहीं। सब मनीष को रिप्लेस कर दी मेसीन प्राइस राइज जो आप माने आगुरी जमती कोबी 5 टंका 7 टंका मिलूला एबे देखिए 30 टंका 40 टंका तलकू कोबी मिलूनी। तार भी इम्पैक्ट होची टेक्नोलॉजी रे। जदि बॉम्बे रे बसिथिबा गोटे लोक जदि 50 टंका रे कोबी पाइला आपण केबे भी आशा करिवेनी जे ओडिसा रे गोटे लोक 5 टंका रे कोबी पाइबो। काहे ना जो मूवमेंट रे ओडिसा रे कोबी 5 टंका बिली मिलिला संगे संग इंटरमीडिएट अछंती ओडिसा रू सब कोबी नै किना बॉम्बे पठै देबे। तेणु टेक्नोलॉजी जेतेबेले सब लोकन को रिप्लेस करि दउची हमकु ताकू नै किना आगु को चिंता करिया पड़िबो। वर्तमान आपण देखिबे रोबोट आसलानी आपनकर चैटबॉट आसलानी ए सब जो नुआ नुआ आपण देख सुनिथिबे अमेरिका रे बहुत लोक भारतीय मान को चाकरी बाहर कर दउछंती। काहे कि बाहर करछंती तेणु हमकु एटा धरि नवा को पड़िबो जे आमे जदि एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करबा ताले हमको सबुतो बेसी दरकार होची एमएसएमई को प्रमोट करबा। जदि एमएसएमई फ्रंट लाइन को न आसिला ताले केबे भी हमर एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व होबो नाही। सेतिबे समस्त को नजर रहितला एतरक एमएसएमई पई कोन योजना करा जायछि। माय वॉइस इज श्रीजुक्त दास आपन को सुबा जाउछि आपन सुनि परछंती सठिक भाबरे। हेलो श्रीजुक्त दास आपन सुनि परछंती। हेलो श्रीजुक्त दास आपन को सुबा जाउछि सठिक भाबरे। तबे कोठी ना कोठी यांत्रिक त्रुटि जोको जोगाजोग विच्छिन्न हो जायछि। पुणी थरे आमे जोड़िबा को चेष्टा करूछु विश्वदेव दास का सहित किंतु जा कुआ जाउछि जो बजेट रूपरेखा आछि पुणी थरे जोड़ी जायछंती। श्रीजुक्त दास आपन को सठिक भाबे बे सुबा जाउछि। आज्ञा आज्ञा
कहतु श्रीजुक्त दास जो भाव में कहते जो रूपरेख कोठी ना कोठी एमएसएमई उपरे कौन केंद्र सरकार लक्ष्य रखिंट कौन योजना करा कोठी ना कोठी समस्त नजर रही आपड़ कि देखुं एमएसएमई वर्तमान जुगरे एमएसएमई आमको नाइदर आपण लग्जरी कहि परिबे ना आपण ताको डिफाइन करि परिबे जे एमएसएमई हमरो समाज रो गोटे माने जेमति आपण देखिबे जे समाज रो गोटे अदरकारी अंग नुहे वर्तमान एमएसएमई जो मात्रा रे हमरो 5 लाख 10 लाख पिला बीटेक एमबीए पास करिके आसुचंती तांको आपण नै किना कोठी थइबे आउ आपण जो एनआरजीएस जो सब भारत सरकार रोजगार स्कीम अच्छी सेगुड़ाक क्या सेगुड़ा होती जो मैंने कुशली नुहति जो मैंने पाठ पढ़ी ना जो मैंने श्रम काम करेंगे आपण एमबीए पिलाटी नहीं तो केवे कहीपर जे आप जातु श्रम काम करेंगे बोले तेणु वर्तमान स्टार्टअप को जो एथर अर्थमंत्री देइचंती स्टार्टअप बाबद टंका सेटा हमर अर्थनीति को आगे नब तापरे स्टॉक मार्केट रे से जो नुआ रिजिम नहीं कि आसी चंती जे कैपिटल मार्केट कथा कहबा श्रीजुक्त दास जो युववर्ग जो मान रहिचंती तांको किबळी भाबरे विश्व स्तर रे तालीम दिया जिवो सेथि पई मध्ये योजना प्रस्तुत करा जायछि हाँ सेथि पई भी हमर स्किल डेवलपमेंट निहाती दरकार देखो प्रति 6 मास को टेक्नोलॉजी बदली जाउची आ जदी सरलीकरण भाषा रे आपण कहिबे आपण जे कोनोसी गाड़ी गोटे किनिबे 6 मास परे देखिबे जे से मॉडल ऑब्सोलीट हे गला तेणु आमको पिला मानकु रेगुलारली ट्रेनिंग अप करके रहे पड़ो ना जो मैसिव स्केल रे छटई आसुची समस्त ऑब्सोलीट हे जे कोनोसी आईटी कंपनी माने आपण देखंतु हमर भारतीय माने अमेरिका रे जाई करथिले कोन से माने जाउथिले आईटी कंपनी रे कारण हमर फास्ट जेतेबेले हमर एजुकेशन सेक्टर को बीटेक कॉलेज को प्राइवेटाइज कराई गला हमर बहुत बीटेक पिला बाहरी गले तेणु से मैंने ही विश्वर विभिन्न देश कनाडा यूएस डेनमार्क सब जगह आमर यही लोक ही पलैले आते से जो मैंने सब 2010 ट्रेंड होते धीरे धीरे से गुरुत्व कमी जाऊँगी से जो कम गुड़ाक करुले बर्तमान से कम गुड़ाक रोबोट कर दौर तेणु युवकों टाइमली ट्रेनिंग निहाती दरकार आउ स्टॉक मार्केट रे बाकी जो मोटा मोटी भाव रे जो बजेट उपस्थापन होईची कोठी ना कोठी ए बजेट चलित वर्ष जो बजेट को बेस गुरुत्व बहन करछ एथि पई काहे ना आगु को जेतु निर्वाचन आसुचे एवं ता पूर्व केंद्र सरकार कर जो बजेट आसीची महिला क्षेत्र रे कहि परिबा कृषि क्षेत्र रे कहि परिबा एवं युववर्ग क्षेत्र रे हो सब क्षेत्र रे कोठी ना कोठी गुरुत्व दिया जाईची ताकू दृष्टि रखि एभली पदक्षेप निया जाईची किछि नुवा योजना मध्ये आसी आकु आपण किभली देखुछंती तो ये एनएफ तो नुहे बहुत गुड़े स्टेप आप देखिए 2018-19 जिते बजेट आसला से जो जो शब्द यूज करा होतला जेमती प्रधानमंत्री गति शक्ति प्रोग्राम आमर गोटे आसला जे आपण रेस्पॉन्सिबिलिटी समस्त सब क्षेत्र में आप रिफॉर्म्स ये सब जो जिनस गुड़िक था एगुड़ाक तो बर्तमान से गुड़ाक कहीं शुणुना गुड़ा आमर एबे गोटे स्लोगान चलती अमृत बेला नहीं तो पुणी आप देखिए 8 वर्ष कला अमृत बेला कौटे फोकस बाहर जाइए तेणु आमको कंसिस्टेंट इफोर्ट देवा पड़ो जदि अर्थनीति को आग को टाणिबा आम स्टैंडअलोन गोटे वर्ष गोटे कथा कहूथबा 8 वर्ष आ गोटे कथा कहूथबा हे परिबनी तेबे मोटामोटी भाव में अर्थमंत्री बहुत सोमा करी करछन्ती एथरक लक्ष्य रखा जायछि 7% ग्रोथ हेबो बोली ग्रोथ तो निश्चय हबो किंतु एई बजेटटा हमर लोकाभिमुखी बिल आमे कहि परियानी किंतु इंटरनेशनल बेंचमार्क अनुसार आम बजेट ठीक अच्छी माने अन्य देश मान जमी कनाडा अमेरिका जमी बजेट तैयारी हुए आम बजेट मोटामोटी से ढांचा ही किंतु जहाँ निर्मला सीतारमण कहते कि समस्त मुंड पिछा आय 2% बढ़ी एथर से स्टाटिस्टिक्स थी जदि शुणु एवरेज कहले मे भी किसी लोक 2% कहीं बेसी पाई जाइए किसी लोक कम पाई जाइए तेणु एवरेज तो 2% रही बट इट्स अ वेलकम स्टेप एनएसओ रो जो डाटा बाहर आमर भारत सरकार को जो मैंने परिसंख्यान दियंती सेटा होची एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एनएसओ रो डाटा होची हाइब्रिड डाटा आपण से डाटा रो आपण जो टाइप रो आउटपुट बाहर करियो चाहिए बाहर करि परिबे बट मोटामोटी इज गुड ओके किंतु मोटामोटी कोठी ना कोठी आपन को खुशी दउची एई बजेट हां आज्ञा
ओके श्रीजुक्त दास अन्यपटे देखा सब ये थाए कोठी ना कोठी मध्यवित्त को ऊपर माड़ होता है महंगा माड़ होता है कहीं अनेक सस्ता होता है अनेक महंगा होता है किंतु ये जो चलित वर्षर बजेट कोठी ना कोठी मध्यवित्त को टिके आश्वस्ति करुच्ची जदि आयकर स्लैब कथा आलोचना करबा सेथरे कोठी ना कोठी टिके छाड़ करा जायछि श्रीजुक्त विश्वदेव दास अपन सुनि परछंती श्रीजुक्त दास अपन सुनि परछंती जो आयकर स्लैब रे वर्तमान परिवर्तन आसीछि एवं कहा जाउछि ये जो आयकर स्लैब कोटी ना कोटी पूर्व 5 लाख रहितला ता वर्तमान 7 लाख को वृद्धि करा जायछि 3 लाख पर्यंत वार्षिक आय पई आयकर शून्य रहिछि 3 रु 6 लाख आय पई टिकस 5% रहिछि श्रीजुक्त दास आपण सुनि परछन जो मध्यवित्त पई कोठी ना कोठी आश्वस्ति टिके आंदे छि कि जो आयकर स्लैब रे परिवर्तन एक्चुअली आपण जो भाबुଛନ୍ତି आयकर लिमिट ता 8 लाख रु 7 लाख ले से नुहे से माने दुईटा रिजिम करछंती गोटे न्यू रिजिम गोटे ओल्ड रिजिम ओके न्यू रिजिम रे जोटा गला थर थिला 5 लाख टंका मु जानिबारे बहुत कम लोक न्यू रिजिम को ऑप्ट करछंती समस्त ओल्ड रिजिम रे रहया चाहछंती कारण न्यू रिजिम रे गोटे पर्टिकुलर पॉइंट पर टैक्स ता फ्लैट तेणु न्यू रिजिम टा जो मानकर अधिक आय अच्छी से सुविधा हुए बाकी जो मानकर अल्प आय अच्छी से न्यू रिजिम को पढ़ाती एथर सेटा को से बढ़े 3.5 लाख टंका रु 2.5 लाख टंका रु सेटा को 3 लाख टंका करछंती सेटा जो 7 लाख कहउछंती 7 लाख नुहे सेटा 3 लाख रहिछि आ न्यू रिजिम टा 3 लाख पर्यंत आयकर सुन रहिछि आगे आ एक्सपेक्ट कराउतला स्टैंडर्ड डिडक्शन आनी बोली स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आनी परनांती श्रीजुक्त दास आपण आउ कोन सब एक्सपेक्ट करा जाउतला जहा चलित वर्ष बजेट रे स्थान पाइ एमएसएमई को सुनतु एमएस गोटे जेकोसी व्यक्ति गोटे शिल्प आरंभ करिया को जीवो आपण निजे देखंतु से केते लोकन को पाखो को जीवो सपोज आपण गां रे गोटे आपण जानि चंदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रे स्कीम बहुत अच्छी गां रे माछ चाष करि पारे गोटे पोखरी खोली करी माछ छाड़ी बोली आपण कागज पत्र देखिबो जे सब दिन सही किंतु आपण नाबार्ड को दौड़ दौड़ कर आपनकर टाइम से पळेबो कहीं आपण जदि गवर्नमेंट गोटे स्कीम अच्छी गोटे सिंगल पॉइंट रे आपण जगह अच्छी आपण सेठी माछ चाष करिवे से माने स्वतः प्रवृत्त हेकि आसिकरी आपनको सहायता करबा कथा मु कथा बुझि साधारण लोक केते फायदा पाइबो ए जो बजेट रो साधारण लोकन को पई मोटा मोटी टैक्स पेयर को पई टिके भलो अछि किंतु साधारण लोकन को पई जो इन्फ्लेशन आउ अनएम्प्लॉयमेंट ए दीटा बहुत माने बाधिबो किंतु मे भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी आनी के लिए किसी ताको बदली परंती किंतु अदरवाइज ए स्ट्रक्चर रे बाधिबो निश्चित किंतु शिक्षा क्षेत्र रे मध्ये किछिटा गुरुत्व दिया जाय छी श्रीजुक्त दास आगे एवं शिक्षा क्षेत्र रे जो जो शिक्षा क्षेत्र को हो किंबा कृषि क्षेत्र हो आकु आपण किभली दृष्टि देखुछंदी कृषि मानक क्षेत्र रे जदि इनपुट क्रेडिट कथा kwa जाउची ये मध्ये कोठी ना कोठी तांको सहायता होय एगुडा सुनंतु एगुडा करे कोन भूमिका नहीं एगुडा करे सरकार कोन किछि भूमिका नहीं सरकार बहुत भूमिका अछि फॉर एग्जांपल आपण देखो आम धान 18 टंका किलो रे बिक्री होची कि 15 टंका किलो रे बिक्री होची सेम जिंस पंजाब रे धान काहे कि 80 टंका रे बिक्री होबो आमर एठी वर्ष को जदि गोटे फसल बाहर चाष जमीन की 2टा फसल बाहर अन्य जगह 8टा फसल 9टा फसल कहीं बाहर एटी कोन टेक्नोलोजी भूमिका नहीं टेक्नोलोजी को कहीं सरकार एक निजे दायित्व ने निजे टेक्नोलोजी आम मैंने देबू ओडिशार धान कहीं 15 टंका बिक्री हम कहीं बिक्री न हो आउ गोटे कथा आप देखिए बॉम्बे की दिल्ली रे जिबे सियाडे जो आलूर साइज आमर आलूर साइज से आलू साइज होची जो साइज रे अपन 70 टंका 80 टंका किलो देकिना किणी नै जिबे आम आलू साइज देखिए 15 टंका दे किणी परिम कहीं ना कहीं जानतनी आ सरकारी बाबू पाखु दौड़िले से आपको दौड़ दौड़ आप झांक झाड़ी आप कम कर तेणु सबुठ बड़ हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव जो लुपहोल्स अच्छी लोक सरकारी ऑफिस को जीवा कौन से दरकार ही नहीं ताको फास्ट बंद करवा दरकार अवश्य बहुत गुड़े जगह बंद कर सारे किंतु आहरी अनेक जगह अच्छी आम प्रथम शेष पर्यटन गोटे नॉर्मल पेटेंट बाहर करिया गले सपोज आप गोटे डिजाइन करी तार गोटे पेटेंट बाहर करेंगे से पेटेंट बाहर करिया गले माने आपण कंपनी सिटीजन किसी बिना पेटेंट रे काम करिवो आज्ञा तेणु आमको सब क्षेत्र में रिफॉर्म्स निहाती दरकार आ सेटा केवल कर परिबे सरकार ये आपण चाहिले मु चाहिले हे परिबोनी
किंतु से क्षेत्र सरकार आउ टिके जदि गुरुत्व देई थांते वे तो आउ टिके बजेट भलो होई थांता भल होइछंता आज्ञा किंतु कृषि क्षेत्र कथा आलोचना कले किंतु महिला क्षेत्र रे हो दिव्यांग क्षेत्र रे हो स्वतंत्र पैकेज मध्ये घोषणा कराई छी स्वतंत्र व्यवस्था मध्ये कराई जाई छी ये कोठी ना कोठी से जे 2 लाख टका ऊपर 7.5% इंटरेस्ट मे बी कॉमन ऑफिस बहुत क्षेत्र लाभ प्लस से जिनसटा मर्जिंग भी करियबो ऑलमोस्ट एट पास अपन देखो बैंक दोची 6.75% एमन दोचंती 7.5% डिफरेंस किंतु मे बी गोटे सम काइंड ऑफ आपण कहिबे सरकार किसी ध्यान तो देचंती परे मे बी आर वर्ष को से 7.5% 10% कर दे परंती गोटे जिनस आरंभ होला आगे किंतु नियुक्ति क्षेत्र में गुरुत्व देइछन्ती कोठी ना कोठी जेतेबेले नियुक्ति बढ़िबो कोठी ना कोठी देशर अभिवृद्धि मध्ये सतिकी बढ़िबो नियुक्ति क्षेत्र में मध्ये एथरा गुरुत्व दिया जाइछि तो नियुक्ति वर्तमान जुग रे नियुक्ति भूली जांतो काहे कि ना आमे सेही आडू को जाउछे हमको मनुष्य दरकार नहीं हमरो रास्ता आगुरु गोटे गोटे रास्ता करिया को 60 दिन 50 दिन लागुतला एबे 3 दिन रास्ता जाउछि बिकॉज़ मैन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय मशीन आपण आगुरु कॉल सेंटर रे बहुत गुडे लोक बसुतले 100 150 200 300 लोक बसुतले एबे तांको रिप्लेस कर देला चैटबॉट आईवीआर सब रिप्लेस कर देला आगुरु जो काम मनुष्य करता है सब काम रिप्लेस कर आपण जो ये ऑफिसर रे जति की ओडिया लोक रहुतले से माने मेनली जो एबे आपण सुनुथिबे अमेरिका रे बहु छटई गूगल एते लोक बाहर कर देला ट्विटर एते लोक को बाहर कर देला माने काहे की बाहर करले एवने बाहर कला मनुष्य कौन रोल ही नहीं गोटे मनुष्य को रखिकी दरमा अपेक्षा मेसीन से कर देवाटा सब ओके तेणु टेक्नोलोजी जिते आसो अनएम्प्लॉयमेंट आसो अनएम्प्लॉयमेंट कथा तो जदि आपण कहउचंदी किंतु एथरा देखुथिबे जो कृषि क्षेत्र रे जा कुआ जाउची कृषि स्टार्टअप कराजिबो ग्रामांचल रे कृषि स्टार्टअप हबो एवं सबटु बड़ कथा होची युववर्ग को कृषि क्षेत्र रे मध्य शामिल कराजिबो तांको मध्य से क्षेत्र रे प्रशिक्षण दिया जिवो हां सेटा दिया हबो सुन से जो नुवा कांसेप्ट सब धरि के आसुचंदी जे कांसेप्ट एथि के नै के आसुचंदी माने करूचंदी कोन केही चाष जमी रे ठिया के ना हळ करूनांती से माने को ट्रेन करा जाउची केम माने मिडिल मैन हबो ओके ये मोटामोटी कोठी ना कोठी सामग्रिक विकास करिबा ओवरऑल जे हमें बजट को आलोचना करिबा मोटामोटी भाव रे श्रीयुक्त दास कोठी ना कोठी देशर जो अभिवृद्धि हार 7% आकलन करा जायछि बा लक्ष्य रखा जायछि ये केते दूर सहायक होई परिबा लास्ट रिएक्शन एटा हबो जीडीपी निश्चय बढ़िबो इन्फ्लेशन अछि जीडीपी निश्चय बढ़िबो एबे तो जीडीपी को रिप्लेस करि किना गोटे नुवा शब्द आनलेनी जीडीए ग्रॉस वैल्यू एडेड ओके तेणु स्टैटिस्टिक्स बढ़िबो किंतु एम्प्लॉयमेंट को लेकिन सरकार को एग्रीकल्चर ही गोटे एमएसएमई गोटे जो दीटा रे ही हम लोक रही परिबे नॉन लोक एम्प्लॉयमेंट न देले लोक मानकर अपराध बढ़िबो कोठी ना कोठी एमएसएमई जो को आपन टिके कोठी ना कोठी निराश अछंती बोध वे आज्ञा आज्ञा ओके बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त दास आपनकर तमाम आलोचना पई ओडिशा इकोनॉमिक फोरम रो सभापति जी रही विश्वदेव दास सहित जोड़ी जहाँ आलोचना करते जदिओ ये बजेट साधारण लोकों जी सहायक हम कोठी ना कोठी एमएसएमई क्षेत्र में जदि आउ टिके योजना होता एवं केंद्र सरकार ए दिगरे गुरुत्व देते हुए तो आउ किछि मात्रा रे सफल होता किंतु जहाँ कहुची एथरक जहाँ आकलन कर अभिवृद्धि हार 7% आकलन कर बजेट रे कोठी ना कोठी मध्यवित्त को सुहाइला भलिया ए बजेट होइतिबा जणा पड़ी कहीं एथिपाई कहा जाउची कि आयकर स्लैब एथर परिवर्तन होइछि समस्त को नजर रहितला कि आयकर स्लैब रे एथर बजेट रे कोन परिवर्तन आसुछि ना समान रहउछि ना सबु बेले मध्यवित्त को ऊपर गोटे महंगा माड़ गोटे ये अभियोग ही आसला किंतु चलित वर्ष जो बजेट होइछि कोठी ना कोठी मध्यवित्तक पई आश्वस्ति आनी देथिबा ये कथा कुआ जाउछि काहे कि ना आयकर स्लैब रे परिवर्तन होइछि आयकर स्लैब बढ़िछि काहे ना पूर्व जोटा 5 लाख थिला वर्तमान ताकू वृद्धि करा जाई 7 लाख करा जाईछि या सहित 3 लाख पर्यंत वार्षिक आय मध्य आयकर शून्य रहिबो 3 रु 6 लाख जो आय कर टिकस 5% रही 6 रु 9 लाख जार आय रोचे से टिकस रहिबो 10% या सहित 9 रु 12 लाख आयकर 15% रखा 12 रु 15 लाख 20% टैक्स रखा 15 लाख रु अधिक आय हेले टिकस मूल्य 30% धार्य करा कहा जो मध्यवित्त परिवार अच्छी कोठी ना कोठी टिके आश्वस्ति मिली बा ये जो तमाम बजेट आसी रेलवे क्षेत्र में कहीपर रेलवे क्षेत्र में जो बजेट आसी एथरक 2.4 लाख कोटी बजेट उपस्थापन करा रेलवे कहुई
तेज ये आरि भितर आयकर स्लाब एवं बजेट रे जदि हाइलाइट्स कथा कहि परिबा कोटी ना कोटी पीएम आवास योजना पई एथरक 66% वृद्धि कराजिबो खर्च वृद्धि जा रही वर्तमान रही एवं पंचायत वार्ड स्तर रे डिजिटल लाइब्रेरी खोला जाय परिबो जो भली भाबरे पिला माने टिके पढ़ी पारिबे बा सेमानकर शिक्षा क्षेत्र रे आहुरी उन्नति होई परिबो वर्षे जाए मागणा अन्न योजना दियाजिबो ये भली एक योजना घोषणा करिसेंती जा पूर्व मध्य चलीथिला एवं ये वर्षे पर्यंत मागणा अन्न योजना दियाजिबो निर्मला सीतारमण एभली कथा मध्य सूचना देइछंती बजेट रे महिला हुंतु दिव्यांग हुंतु एवं कृषक हुंतु समस्तक पई स्वतंत्र व्यवस्था करा जायछि युवा वर्गक पई कोठी ना कोठी ये व्यवस्था मध्य करा जायछि इनपुट क्रेडिट बीमा मध्य सुविधा मिलिबो आर्थिक अभिवृद्धि कथा जा कुआ जाउछि ताहा मध्य 7% आकलन करा जायछि शिशु हुंतु युवक हुंतु समस्तक पई डिजिटल लाइब्रेरी करा जिवो एवं जहा फल रे सेमानक पई किछ ना किछ लाभ बा फायदा हेबो बोली कुआ जाउछि शिक्षकंकु जो नियुक्ति दिया जिवो तांको मध्य प्रशिक्षण दिया जिवो से क्षेत्र रे गुरुत्व दिया जिवो पंचायत हो एवं वार्ड स्तर रे डिजिटल लाइब्रेरी खोला जाय पिलामानंक पई मध्य उपयुक्त करा जिवो एकलव्य मॉडल स्कूल मध्य खोला जिवो जहा कुआ जाउछि पैन कार्ड कॉमन आइडेंटिफायर मध्य रहबो ये जा आसुची बजेट रे रेल पई 2.4 लाख कोटी रो मध्य पैकेज बा एथरा बजेट रही जदि आउ थरे आमे आलोचना करबा ए बजेट रे कौन सब सस्ता आसीबो कौन महंगा आसीबो जो अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ए जो बजेट उपस्थापन करिसेंती या भितरे खेलना कथा कहि परिबा साइकेल हो ऑटोमोबाइल ये सब सस्ता आसीबो बोली कुहा जाउची एवं क्षमा करी ये जो आसुची वैद्युतिक जान सस्ता हेबो खेलना साइकेल ऑटोमोबाइल सस्ता हेबो विदेश रो जो रूपा आसुची सुना आसुची ये कोठी ना कोठी सुना रूपा रे महंगा आसीबो प्लाटिनम जोरा रहिची ये मध्य महंगा आसीबो बोली कुआ जाउची एवं जो चिमिनी किचन रे जो चिमिनी व्यवहार करा जाय सेथरे मध्य महंगा हेबो ये जा बजेट आसीची बजेट उपस्थापन परे ये सब जिंस महंगा हेबो बोली कुआ जाउची किछि मोबाइल फोन मध्य महंगा होई पारे एवं कैमरा लेंस ये सस्ता हो पारे एवं किछि मोबाइल फोन सस्ता मध्य होई पारे ये मध्य कुआ जाउची किंतु सिगारेट महंगा हेबो ये जो चलित आर्थिक वर्षर बजेट उपस्थापन होईची ये वर्तमान जा आसुची तारी भितरे पीएम आवास योजना पाई मध्य खर्च 66% वृद्धि करा जिवो बोली कुआ जायछि ग्रामांचल रे कृषि स्टार्टअप खोला जिवो ता सहित कृषि पाई डिजिटल भित्तिभूमिर विकास कथा मध्य गुरुत्व दिया जायछि ता सहित एथर बजेट रे आसंता वर्ष पाई मध्य ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करा जायछि किबळी भाबरे न्याय प्रदान व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली करा जाय परिबो फेक 3 ई कोर्स प्रोजेक्ट लॉन्च करा जिवो जहा पाई खर्च हब पाखापाखि 7,000 कोटी टंका ये ब्लूप्रिंट वर्तमान प्रस्तुत करा जेथिबा जणा पड़िछि एवं युवा वर्गं को कृषि पाई आकृष्ट करा जिवो तापरे एथरक गुरुत्व दिया जायछि इनपुट क्रेडिट कथा कहि परिबा बीमा सुविधा करा जिवो कृषि मानक पाई कृषि पाई डिजिटल भित्तिभूमिर आवश्यकता रहिछि बा से दिगरे मध्य विकास करा जिवो पंचायत ग्राम रे गोपालन सोसाइटी मध्य प्रस्तुत करा जिवो बा प्रस्तुत करा तयारी करा जिवो मत्स्यजीवी हुंतु कृषक हुंतु एवं पशुपालन हुंतु ए क्षेत्र रे बा पशुपालन को मध्य गुरुत्व दिया जिवो ए तमाम क्षेत्र रे जदि हमें कहि परिबा कोठी ना कोठी सबु क्षेत्र को गुरुत्व दिया जायछि किंतु जहा पूर्व आम आलोचना करुथिले विश्वदेव दास जे आम सहित जोड़ीथिले इकोनॉमिक फोरम रो सभापति सी जा कहते कोठी ना कोठी एमएसएमई क्षेत्र में जदि आउ टिके गुरुत्व दि जाइथांता ता फल कोठी ना कोठी ये जो अभिवृद्धि हार आउ टिके बढ़ी था तापर मध्य समस्त का नजर होता किंतु तापर दर्शक बंधु ये थिला बजेट 2023-24 जो चलित आर्थिक वर्षर बजेट उपस्थापन करा जायतिला ये थिला तमाम चित्र ये रूपरेख मध्यवित्त को कोठी ना कोठी टिके आश्वस्ति मिलथिबा जणा पड़ि तेबे परवर्ती खबर को आसीबा आउ एक गुरुत्वपूर्ण खबर जहा से कहा जाउची कि किंतु तापर नजर पकेबा कि खबर जहा आसुची ये बजेट 2023-24 उपस्थापन करा जायछि एवं तार भितरे सबु वर्ग को मध्य नजर दिया जायछि सबु वर्ग को फोकस करा जायछि एवं आउ थरे जा कहबी जा सूचना से पहुंचुची कि आउ गोटे अन्य परवर्ती खबर पर दर्शक बंधु नजर पकेबा आउ एक गुरुत्वपूर्ण खबर कहि परिबा कि नवदास मृत्यु घटना रे हत्या घटना रे जो वर्तमान गोपाल दास जे अभियुक्त रहितला ताकू 4 दिन रिमांड रे नेची क्राइम ब्रांच
एवं ए 4 दिन भितरे पूर्व 7 दिन पर आवेदन करा जायतिला किंतु तारि भितरे 4 दिनिया रिमांड आवेदन मिलिथिबा जणा पड़िछि एवं ए 4 दिन रिमांड भितरे अनेक गुरुत्वपूर्ण तथ्य हासिल करिबो क्राइम ब्रांच टीम एवं नवदास को गाड़ी को मध्य फॉरेंसिक टीम गुरुत्वपूर्ण तथ्य मिलिथिबा जणा पड़िछि कहिना ये क्राइम ब्रांच टीम जोरदार खोलताड़ करुछि तदंत करुछि कहिना ये घटना परे वर्तमान धीरे धीरे जो सामना को आसुछि कोठी ना कोठी जो ड्यूटी रे जो माने अवहेला करथिले तांको उपरे तो कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायछि ब्रजराज नगर आईआईसी को कथा कहि परिबा झारसुगुड़ा एसपी को कथा कहि परिबा ये तमाम क्षेत्र में कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायछि तांको अदल बदल करा जायछि अन्य जगह को बदली करा जायथिबा जणा पड़िछि किंतु आरि भितरे जो नवदास को पीएसओ जी रहिथिले मित्रभान देव तांको मध्य निलंबन करा जायथिबा जणा पड़िछि किंतु ये आरि भितरे जो गोपाल दास को कथा कुआ जाउछि झारसुगुड़ा जेएमएफसी कोर्ट तांको 4 दिन रिमांड देथिबा ये खबर आसी पहुंचुछि ए 4 दिन रिमांड भितरे अनेक गुरुत्वपूर्ण तथ्य सामना को आसी पारे अनेक दिग को नै मध्य क्राइम ब्रांच टीम पचराउचरा करिबो प्रकृति रे गोपाल दास किभली भाबरे हत्या करथिले काहेकिना गतकाली आपण जानिथिबे जो घटनास्थल को जाइतिला जोठी की गुलिकांड करा जाइतिला सेठा को क्राइम ब्रांच जाइतिला एवं तदंत को जोरदार करथिला फॉरेंसिक टीम मध्य जाइतिले नवदास को गाड़ी जो गाड़ी रे गुली बाजिथिबा मध्य सामना को आसीथिला सेही गाड़ी रे जहाँ कहुच्छी अनेक गुरुत्वपूर्ण तथ्य बा प्रमाण मिलता कहुच्छी ये जो हिस्ट्री मिस्ट्री है कि रही नवदास का हत्या गोटे मर्डर मिस्ट्री वर्तमान है कि रही या पछरे कौन कहुच्छी उद्देश्य कौन रही वर्तमान सुधा जना पड़नी कहीं अनेक आ भितरे धीरे धीरे गुमर मध्य सामना को आसुची गोपाल दास कथा कहि परिबा प्रकृति रे गोपाल दास मानसिक स्थिति यार खराब थिला ना या पछरे आउ किछि बड़ षडयंत्र कहीं आपण जानिथिबे जो बड़ षडयंत्र कथा सामना को आसुची या को नै मध्य अनेक स्थान विरोध आसुची कहीं नवदास को हत्या पछरे गोटे बड़ षडयंत्र अभियोग सामना को आसुची राजनीतिक दल माने हुंतु ये सामना को आसुचंती सीबीआई तदंत कथा सामना को आसुची कि सीबीआई तदंत कले हुए तो समस्त घटनार पर्दाफाश हो पारिबो किंतु जेतेबेले मंत्री नवदास को सुरक्षा दायित्व रे रहितिले तांकर पीएसओ रहितिले तांको ड्यूटी रु अवहेला पाई वर्तमान निलंबित करा जायछि मित्रभानु देव जी रहितिले काहेकिना जेतेबेले नवदास को सुरक्षा जोगाई पालेनी से काहेकि रहिबे सेतिपई तांको सस्पेंड करा जायतिबा ये खबर आसी पहुंचुची आ सहित ब्रजराजनगर आईएएस को कथा कहि परिबा तांको मध्य बदली करा जायतिबा जणा पड़िछि ता भितरे जो खबर आसी पहुंचुची क्राइम ब्रांच अनेक तनाघना करुची जांच करुची टेक्निक जो सूत्र रही प्रत्येक सूत्रु वर्तमान छानबीन करुवा जना पड़ी किंतु अनेक क्षेत्र में वर्तमान नवदास का मृत्युर 3 दिन पर ये वर्तमान कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबारे लागिछि राज्य सरकार का पक्षरु मध्य पदक्षेप निया जाउछि ब्रजराजनगर आईआईसी जे रहिछंती तांकु मध्य बदली करा जाइछि प्रद्युम्न कुमार स्वाई तांकु बदली करा जाइछि संबलपुर जिला पुलिस मुख्यालय को तांकु बदली करा जाइथिबा जणा पड़िछि या सहित गांधीचक फांडीर जे रहिथिले अधिकारी एसआई शशिभूषण पोढ़ो को मध्य बदली करा जाइछि सुवर्णपुर जिला पुलिस मुख्यालय को शशिभूषण पोढ़ो को बदली करा जाइथिबा जणा पड़िछि या सहित जो संबलपुर झारसुगुड़ारू मध्य आसीछंती इंस्पेक्टर धवलेश्वर साहू ये तमाम वर्तमान खबर आसी पहुंचुची कहिना जो घटना घटी जाइथिला अचानक समस्तंकर जोटे हतबाक होई पड़िथिले मर्माहत होई पड़िथिले नवदास को हत्या केमिति करागला काहींकी करागला या पछर उद्देश्य कौन एवं अभियुक्त को जदियो वर्तमान सुधा पचराउचरा करा जाउछि किंतु कौन तथ्य सामना को आसीछि ए पर्यंत कोनसी सुराग पाई पारि नहीं पुलिस एवं कहा जाउछि गांधी चौकरे मंत्री नवदास को ऊपर को जो पुलिस एसआई गोपाल दास गुली चालना करथिले गुलीमार करथिले जोथरे कि नवदास को छाती रे गुली बाजितला तांकर अवस्था संकटापन्न रहितला प्रथमे तांको झारसुगुड़ा मुख्य चिकित्सालय भर्ती करा जायतिला तापरे एआर एम्बुलेंस के भुवनेश्वर अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती करा जायतिला किंतु सेठारे चिकित्साधीन अवस्था रे तांकर मृत्यु घटितिला एवं ये जो पूरा घटना रहितला या परे वर्तमान धीरे धीरे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाउछि वर्तमान तांकर पीएसओ जे रहितले तांको सस्पेंड करा जायतिबा जणा पड़िछि मित्रभानु देव तांको वर्तमान
दायित्व बा ड्यूटी रे अवहेला तांकू निलंबित करा जायतिबा वर्तमान जना पड़ी। यार भितरे क्राइम ब्रांच अन्यपटे मध्य खोलताड़ करुची, घटनार छानभिन करुची। प्रकृति रे ये घटना जो धीरे धीरे रहस्य आसुची, या पछर कारण कौन, कहीं गोपाल दास गुलीमाड़ कले, हत्या कले एवं तांकू किए मोहरा सजैथिला ना या पछरे राजनैतिक षड्यंत्र, कहीं व्यावसायिक शत्रुता मध्य अनेक रहिथिले एवं जो माफिया मान जो काम करुथिले, जो व्यवसाय रे पाद देथिले नवदास, कोठी ना कोठी अनेक माफिया मानकर नियुक्ति मध्य सेते थाएबा, अनेक माफिया माने सेतरे संश्लिष्ट थांती एवं ये मध्य कोठी ना कोठी समस्तिक भितरे गोटे आशा आशंका प्रकाश पाउची। ये व्यवसायिक शत्रुता ना राजनैतिक शत्रुता ना कौनसी व्यक्तिगत शत्रुता रहितला गोपाल दास कर, जा फल ये घटना घटाइले गोपाल दास। ये 4 दिन रिमांड भितरे अनेक तथ्य हासिल करने को लागिबो क्राइम ब्रांच टीम, कहीं कह जाउछि क्राइम ब्रांच अनेक दिग को लेकिन तदंत करिबो। ए 4 दिन रिमांड भितरे जो अनेक भितरे असमाहित प्रश्न रही, जो अड़ुआ सुता है कि रही ये घटना, जदिओ मानसिक रोगी जितेबाला नुआ मोड़ आसला ये घटन जिते पत्नी कहले कि तांका स्वामी जड़े मानसिक रोगी एवं जड़े मानसिक रोगी को किभली भाव में पुलिस दायित्व दियाला, ये वर्तमान कोटी ना कोटी बड़ प्रश्न साजिथिला एवं समस्त मनरे ये प्रश्न सामना को आसीथिला। तार भितरे जो गाड़ी रे बसीथिले जतेबेले नवदास बसीथिले से गाड़ी को मध्य छानभिन करा जायछि एवं से गाड़ी रु अनेक गुरुत्वपूर्ण तथ्य हासिल करिथिबा कुआ जाउछि। क्राइम ब्रांच हाथ रे लागिथिबा जणा पड़िछि एवं क्राइम ब्रांच तमाम घटना को नहीं छोट छोट आरंभ करी जहाँ सुराग पाउची ताकू मध्य तदंतर परिसरभुक्त करा जाउची। गोपाल दास को परिवार कथा कहि परिबा, ब्रह्मपुर जाई क्राइम ब्रांच रो गोटे टीम तदंत करिथिला एवं तापरे तांको बड़ भाई जे रहिथिले तांको मध्य उठाई नेथिला क्राइम ब्रांच टीम एवं यहाँ परे वर्तमान खोलताड़ करा जाउची, छानभिन करा जाउची। ए घटना को किभली भाव में सत्यासत्य जना जिवो, यार जो गुमर या पछरे गोटे रहस्य है कि रहिची, ए रहस्य किभली भाव में सामना को आसीबो सेने क्राइम ब्रांच टीम तनाखना आरंभ करि देइची, जोरदार करुची तार खोलताड़। घटनास्थल रे फोरेंसिक टीम मध्य जांच करिथिला, टेक्निक सुराग को हाथेची फोरेंसिक टीम एवं क्राइम ब्रांच टीम ए सब जिंस को टेक्निक भाव में नजर रखी ताकू तदंतर परिसरभुक्त करिछि एवं तदंत को जोरदार करा जायथिबा जणा पड़िछि। तारि भितरे अनेक दिग मध्य जा सामना को आसुछि कि बंधुक किभली भाव में गोपाल दास को दिया जायथिला, जणे जेतेबेले एएसआई को दायित्व दिया जायथिला, ट्रैफिक ड्यूटी दिया जायथिला, से समय से किभली भाव में आसिले एवं गुलीमाड़ कले, कहीं गुलीमाड़ कले एवं ता भितरे अनेक प्रश्न मध्य सामना को आसुछि कि गुलीमाड़ करुथिबार दृश्य एते वीडियो उत्तोलन करा जाउथला किंतु ता भितरे किभली भाव में जना पड़ला नहीं कि प्रकृति रे किए गुलीमाड़ करिछि। गोपाल दास गुलीमाड़ करिसेंती जदिओ से स्वीकार करिसेंती किंतु तार वीडियो कहा पाखरे भी नहीं, किंतु वर्तमान सबु तथ्य प्रमाण गोटेबारे लागिछि क्राइम ब्रांच टीम, कहिना तथ्य जोगाड़ करिबारे एबे क्राइम ब्रांच टीम व्यस्त रहिछि। गोपाल दास को जेरा करा जिवो, जो 4 दिनिया रिमांड अवधि भितरे अनेक दिग को नहीं तदंत करिबो, अनेक दिग को नहीं पचराउचरा करिबो, केबेठारु मानसिक रोगी थिले, केबेठारु से मेडिसिन खाउथिले, तांकर मानसिक स्थिति किभली रहितला एवं ये तमाम घटना सामना को आसला परे तापरे जे कि धीरे धीरे जो तथ्य रहितला, जो सुराग रहितला, कोठी ना कोठी जो रहस्य है कि रहिछि, वर्तमान ये मिस्ट्री गोटे तार खुलासा करिबो, पर्दाफाश करिबो, ये सामना को आसुची। अनेपटे जो कार्यानुष्ठान धीरे धीरे निया जाउची समस्तिक पई, जो माने अवहेला रे कर्तव्य रे अवहेला करिसेंती, ड्यूटी रे खिलाफ करिसेंती, तांको उपरे कार्यानुष्ठान निया जाउची। पीएसओ मित्रभानु देव को सस्पेंड करा जायछि एवं गतकाली मित्रभानु को क्राइम ब्रांच मध्य जेरा करिथिला। ये सूचना पहुंचीथिला ब्रजराजनगर थाना रे क्राइम ब्रांच एडीजी अरुण बोथरा 2 घंटा धरी पीएसओ जी रहिथिले, तांकू जेरा करा जायथिला एवं नीचे अरुण बोथरा 2 घंटा धरी जेरा करिथिले। मित्रभानु देव को सी थिले नवदास को पीएसओ, तांकू जेरा करा जायथिला। सबुठारु बड़ कथा ला अभियुक्त एसआई गोपाल दास को बड़ भाई जे रहिथिला तांकू मध्य उठाई नेथिला, कहिना तांकर जो गांधी छक बजार रे शोरूम निकट रे ब्रह्मपुर होटल खोलिथिले सेठारे एवं सेठारे ही गोपाल दास बसा उठा करथिले, किंतु घटना दिन ठारू ए होटल काहे बंद रहितला, सेथि पई कि गोपाल दास को
बड़ भाई जी रही उठाई नहीं क्राइम ब्रांच टीम एवं पचराउचरा करथिला। एही होटेल ही हत्याकांडर नक्शा हुए तो प्रस्तुत होई पारे एभली एक आलोचना करा जाउची बा चर्चा जोर धरिछि, जहा फल जेहेतु रविवार दिन ठारू ए घटना पर ठारू दुकान बंद रही कहीं दुकान बंद करते बड़ भाई ये कोठी ना कोठी संदेह घनीभूत होता जहा फल बड़ भाई को मध्य पचराउचरा करा जायतिला। नक्शा प्रस्तुत करा जायतिला हुए तो जो हत्याकांडर ब्लूप्रिंट कहा जाउची ये जो योजनाबद्ध भाव में हत्या करा जायछि ना या पछरे आउ किछि कारण रही ये नक्शा कोठी ना कोठी ये ब्लूप्रिंट कोठी ना कोठी से दुकान भितर ही प्रस्तुत होई पारे बा होटेल भितर प्रस्तुत होई पारे एभली चर्चा बा एभली संदेह मध्य घनीभूत होगा लगी। अन्यपटे क्राइमब्रांच आउ एक टीम अभियुक्त गोपाल दास पैतृक घर जो रही ब्रह्मपुर सेठरे परिवार लोकों को पचराउचरा करथिला। बड़ भाई सत्यनारायण दास को उठाई नहीं अज्ञात स्थान रखी गतकाली पचराउचरा करथिबा जणा पड़ी। किंतु अन्यपटे क्राइमब्रांच आउ एक टीम फरेन्सिक टीम सहित जांच करुछंती, छानबीन करुछंती, घटनार तदंत करुछंती। बड़ प्रश्न से समान प्रश्न समस्तक मन में आसुची, से असमाहित प्रश्न वर्तमान समस्तक मन में ही रही कहीं एभली स्थिति देखादेला, कहीं ये घटना सामना को आसला, या पछरे कारण कौन रही, उद्देश्य कौन रही। 4 दिनिया रिमांड रे वर्तमान जेहेतु अभियुक्त गोपाल दास वर्तमान रही कहीं पूर्वर 7 दिनिया रिमांड आवेदन करथिले तदंतकारी टीम बा क्राइम ब्रांच आवेदन करथिला, किंतु तदंत पई क्राइम ब्रांच गठन करिछि आउ 2टी टीम मध्य गठन करा जैथिबा जणा पड़िछि। या सह तदंतर अनुध्यान वर्तमान निजे क्राइम ब्रांच एडीजी अरुण बोथरा जी रहिसंती से वर्तमान करूछंती। झारसुगुड़ा एसपी हुंतु ब्रजराज नगर एसटीपीओ को मध्य बदली करा जैथिला गतकाली एवं आज ब्रजराज नगर आईआईसी जे रहिसंती तांको बदली करा जायछि एवं गांधी चौक फांडीर एसआई जे रहिथिले अधिकारी तांको मध्य बदली करा जायतिबा ये सूचना आसी पहुंचुची। अभियुक्त गोपाल को भाई को क्राइम ब्रांच हेफाजत को नैथिबा वर्तमान जना पड़िछि। ये थिला जहाँ क्राइम ब्रांच जेरा करुछि वर्तमान तदंत करुछि ये गोपाल दास नवदास क्षेत्र में जो घटना को आहुरी छानबीन करा जाउछि, तदंत करा जाउछि, जहाँ वर्तमान ये चित्र सामना को आसुछि। ये होउछन्ति सेही अभियुक्त गोपाल दास जे कि नवदास को गुली मारी हत्या करथिले। काहेकि गुली मार कले या पछर कारण वर्तमान सुधा अस्पष्ट रही, तदंत करा जाउछि, पुलिस पचराउचरा करुछि, किंतु एपर्यंत पुलिस हाथ कौन सुराख लगी अर्थात क्राइम ब्रांच हाथ कौन सुराख लगी ताहा वर्तमान सुधा अस्पष्ट रही। किंतु ये जो रहस्य है कि वर्तमान रही अनेक प्रश्न आसुची, गोपाल दास को बंधुक कहीं दि जाइथिला, जने पागल को कहीं सुरक्षा दायित्व दि जाइथिला एवं जने पागल जदि गोपाल दास मानसिक स्थिति भल नथिला ताहाले तांकु किभली भाबरे ड्यूटी रे भर्ती करा जाइथिला। ये तमाम प्रश्न वर्तमान सामना को आसुची। ये असमाहित प्रश्न आर जो अड़ुआ सूतार खिय वर्तमान खोजुची क्राइम ब्रांच टीम। 2टी टीम मध्य आ 2टी टीम गठन करा जायछि, जहा फल रे ए टीम वर्तमान आहुरी खोलताड़ को जोरदार करुछंती। अन्यपटे जो फरेन्सिक टीम हो अनेक गुरुत्वपूर्ण तथ्य संग्रह करथिबा जणा पड़िछि। ये नवदास को मृत्यु पछरे बा हत्या पछरे ये बड़ रहस्य रही, जहार खोलताड़ बा छानबीन सरजमीन तदंत करा जाउथिबा कहा जाउछि। क्राइम ब्रांच टीम घटनास्थल रही निजे क्राइम ब्रांच एडीजी जे रहिसंती सीए तदंत करुथिबा जणा पड़िछि। आरि भितरे दर्शक बंधु ये थिला गोटे गुरुत्वपूर्ण खबर नवदास को क्षेत्र में जहाँ कहा जाउछि। किंतु अन्यपटे आउ एक खबर उपरे नजर पकेबा जहाँ खबर आसी रही कि जेहेतु खंडगिरी मेला वर्तमान धीरे धीरे जमीबारे लगी। खंडगिरी रे अनेक साधु सन्त आसिछंती, अनेक साधु बाबा आछंती, जहाँ फल भक्तंकर भिड़ मध्य लगी बा श्रद्धालुंकर भिड़ देखा मिली। खंडगिरी वर्तमान जमुची लोकों भिड़ माघ सप्तमी ठारू आरंभ हो सारी माघ मेला। ए माघ मेला भितर कोठी ना कोठी लोक माने यार मजा बेस नौछंती। साधु सन्थकर गोटे महात्म्य जहाँ कह जाउछि खंडगिरी पीठरे जो महात्म्य रही साधु सन्थ माने आसुचंती एवं सेठारे जो निजर सिद्धि लाभ करबा पई ध्वनि मध्य लगाइछंती। प्रकम्पित होउछि सेमानकर ध्वनि जहाँ नाम कीर्तन वर्तमान चली सेठारे प्रकम्पित होउछि। माघ सप्तमी ठारू जो माघ मेला आरंभ हो जाइछि, अन्यपटे यात्रा कुंभ मध्य आरंभ हो जाइछि। यारि भितरे लोकमानकर भिड़ देखिबाकु मिलिछि खंडगिरी यात्रा रे।
खंडगिरी कुंभ मेलारे श्रद्धालु मानकर भिड़ मध्य जमाइछंती। अनेक अनेक श्रद्धालु जो साधु बाबा माने आछंती देशर कोण अनुकोणरू साधु सन्थ माने सेठा रहिछंती निजर सिद्धि लाभ करिबा पई या सहित जगतर कल्याण उद्देश्य रे यज्ञ होम इत्यादि करुथिबा देखिबाकू मिलिछि। ध्वनि मध्य जलाउछंती। याहारी भितरे जो श्रद्धालु माने आसुछंती मुख्य आकर्षण अनेक बाबा रहिछंती। डाक्टर बाबा कथा कहि परिबा, स्टैंडिंग बाबा हुंतु, अनेक साधु बाबा रहिछंती, नागा साधु माने रहिछंती। जा सूचना रहितला कि 800 साधु सन्थ रहितबा बेले 80 नागा साधु मध्य आसीछंती एई खंडगिरी यात्रा को। एवं 2 वर्ष पर जेतु कोविड कटकणा हटि जाइछि श्रद्धालुंकर भिड़ मध्य जमुची। ये जो 9 दिनर जो मेला रहितला कोठी ना कोठी लोकंकर भिड़ दिनकु दिन बढ़िबारे लागिछि। ये मध्य देखिबाक लागिछि। किंतु याहारी भितरे मुख्य आकर्षण साजिछंती स्टैंडिंग बाबा। कहीं स्टैंडिंग बाबा पाखकू अनेक लोकंकर भिड़ देखिबाकू मिलिछि। गोटे गोड़े छिड़ा होई बाबा किभଳି भाबरे लोकमानकू बा श्रद्धालुंकू आशीष दउछंती, विभूति लगाउछंती, तांकू आशीर्वाद करूछंती एवं लोकंकर लंबा लाइन मध्य देखिबाकू मिलिछि। तेबे ए संपर्क रे हमकू अधिक सूचना मध्य दउछंती हम सहयोगी स्मिता मध्य सेठा जाइतिले एवं स्टैंडिंग बाबा सहित अधिक आलोचना करथिले। खंडगिरी अधिक सूचना दउछंती हम सहयोगी स्मिता। आरंभ हो जाइछि खंडगिरी मेला। माघ सप्तमी ठारू खंडगिरी रे आरंभ हो जाइछि खंडगिरी मेला। खंडगिरी मेला रे देखिया को मिलिछि लोकों का भिड़। गाँव सहर सब प्रकार लोक खंडगिरी जमा होइछंती। राज्य तथा देशर विभिन्न कोण अनुकोणरू साधु सन्तंकर आगमन होइछि। कथा रहिछि खंडगिरी मेला रे नाग साधुंक ठारू आरंभ करी विभिन्न प्रकार साधु सन्त खंडगिरी को आसितांती। एठारे खंडगिरी मेला होउछि तीर्थ स्थान। एठारे से माने तपस्या करी विभिन्न सिद्धि लाभ करछंती। तक साधु को देखा करबा को लोकों को भीड़ जमी थाए। किंतु आमे आज एमिति एक साधु को कथा कहबू जे कि जहां को देखा करबा को लोकों को अनेक भीड़ लागिछि। आपण माने देखि परतबे मु हम कैमरा सहयोगी कहबो से देखैबे बाबा को। बाबा होउछनी तांको कहउछनी स्टैंडिंग बाबा। गोटे गोड़े ठिया हे कि बाबा आराधना करछंती। से हरिद्वार आसिचंती स्टैंडिंग बाबा। आपण माने देखि पारुथबे गोटे गोड़े ठिया हे कि आराधना करछंती। तांको देखिबाकू लोकों को भीड़ जमिछि। तांकोठु आशीर्वाद नबा पई लोकों को भीड़ जमिछि। आसंतु बाबा सहित कथा बा। नमस्ते बाबा। बाबा आप कहां से आए? हरिद्वार से आए हैं। बाबा आप एक पैर से खड़े हैं जी। फिर आपको दर्द नहीं करता? नहीं, बदल लेते हैं। बदलते हैं आप? बाबा आप ये यहाँ पर जो खड़े हैं आप क्या करना चाहते हैं? मतलब आपको क्या आराधना क्या है? नहीं, हम लोग तो ये हमारा कर्म है, हम तपस्या करते हैं। बाबा लोग क्या करेंगे? भजन पूजन तपस्या त्याग, यही तो और क्या। अच्छा बाबा आप लोगों को आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं? इसके पीछे की कुछ बात जो है जो नहीं नहीं नहीं, ये आकर्षित करने के लिए नहीं, ये तो हम अपनी तपस्या करते हैं। बाबा आपको मिलने के लिए आपका आशीर्वाद लेने के लिए इतने लोग आए हैं, इतने भक्त आप क्या कहना चाहेंगे? अब उनको भगवान पे आस्था है, विश्वास है, तो ये हमारे लिए नहीं आते हैं। ये आते हैं 10 भुजा माता के लिए। और ये स्थान खंडगिरी है ना, इसके लिए आते हैं। तो इनके रास्ते में हम लोग पड़ जाते हैं। तो ये भी नई चीज, आज की दुनिया नया कुछ देखना चाहती है तो देखने में लग जाती है। फिर जिनको भगवान पर विश्वास है, बाबाओं पर विश्वास है, तो आते हैं। अब रामायण में कहा गया है, जे की रही भावना जैसी। तुम मुझे अगर बाबा रूप में देखोगे तो मैं बाबा रूप में दिखूंगा। तुम मुझे भोलेनाथ के रूप में देखोगे तो भोलेनाथ का रूप दिखूंगा। ठीक है ना? ये आपका विषय है, आपको किस नजरों से देखना है। हम आपको मजबूर नहीं कर रहे कि आप आइए, मत आइए आप। हम भजन करने, तुम नहीं आओगे तो हम शांति से भजन करेंगे। हमें आवश्यकता नहीं है। क्यों आते हैं आप? आस्था है, विश्वास है, इसलिए तो आपसे मिलने आ रहे हैं। इतने वक्त लाइन लगे हुए हैं बाबा यहाँ। धन्यवाद आपका। बाबा कितने साल से आप यहाँ पे आ रहे हैं? तीसरी साल। सर 2 साल तो महामारी कोरोना के चक्कर में बंद हो गया था। आप लोग नहीं नहीं नहीं, हम लोग आए थे और हम लोगों ने कहा भी था, हमने पहले भी कहा था कि आप डरना नहीं, कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
अपने आप में क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, अगर भयभीत हो गए तो बीमारी से ज्यादा तो आपको भय मार देती है कि नहीं? जैसे कि आजकल बड़ा चल रहा है कि मीडिया वाले ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, पता नहीं क्या क्या कैसे होते हैं, हमें तो पता नहीं। हमें तो आप अच्छे लगे। और क्या कहें बोलो, कितने दिन तक आप ऐसे खड़े रहेंगे? जब तक ये मेला रहेगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप श्रद्धालु को? हम तो यही कहेंगे, हम तो आजकल बहुत सालों से ध्यान करते हैं और ध्यान में जो आनंद आता है और हमें अपनी बॉडी को बहुत एनर्जी मिलती है, मन को शांति मिलती है, तो हमें भी ऐसा लगता है कि संसार को हमें ये मैसेज देना चाहिए कि मन को शांत रखने के लिए एक ध्यान ही ऐसा उपाय है जो मन को शांत किया जा सकता है। हर हर महादेव। धन्यवाद बाबा आपको हमको इतना बताने के लिए। आपण माने देखुतिले बाबा को देखिबे को केते भिड़ मु देखिया को चाहिबे दर्शक मान श्रद्धालु मानकर केते भिड़ होईची। मासी कोन कहबे बाबा को दर्शन करे क्वेश्चन कोन विश्वास नहीं के क्वेश्चन मु विश्वास नहीं के आसी मो किंतु भल हो। आप प्रथम थर आछन बाबा को दर्शन ना आगुर आसी? नहीं नहीं प्रथम थर आई। सर आपण बाबा को भाई लाइन लगै छ कोन कहबे? दर्शन करने को आसु, दर्शन करके जीवु भलरे भलरे आ। देखुतिले खंडगिरी रे बाबा को देखा करे स्टैंडिंग बाबा को देखा करिया को केते भीड़ लागिची। ये होची खंडगिरी रे चित्र जेट 2 वर्ष हेलाणी महामारी कोरोना पाई मेला बंद थिला। चलित वर्ष मेला होइची बोली लोकन को समागम देखिया को मिलची, अनेक भीड़ रहिची। ये होची सही खंडगिरी रे दृश्य। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन रंजित को सह मुस्मिता, न्यूज 8 ओडिया। आरंभ हो जाइची। तो दर्शक बंधु आप देखुले खंडगिरी जो स्टैंडिंग बाबा कोठी ना कोठी वर्तमान मुख्य आकर्षण साजिଛନ୍ତି। गोटे गोड़े छिड़ा होइଛନ୍ତି एवं तांको पाखरे श्रद्धालुंकर लंबा लाइन मध्ये देखिबा को मिलिछि। मन को शांति रखिबा पई ध्यान ही एकमात्र माध्यम एभली वार्ता दउଛନ୍ତି स्टैंडिंग बाबा। सेथि पई कि तांकर आशीष नेबा पई लोकमानकर भिड़ देखिबा को मिलिछि। जेहेतु देशर विभिन्न प्रांतरु मध्य अनेक साधु सन्त एठारो आछन्ते एवं ये हरिद्वार आछन्ते स्टैंडिंग बाबा। तांको पाखरे अनेक लोक जो जार समस्या रहुछि तार समस्यार समाधान करबा पई साधु सन्त को आशीर्वाद नोथबा देखिबा को मिलिछि। तो दर्शक बंधु समय सरिछि कार्यक्रम को एट रखुछु। अधिक खबर पई लॉगिन करंतु हमर वेबसाइट www.news8odia.com। फेसबुक रे हमको लाइक करंतु, यूट्यूब रे सब्सक्राइब करंतु। रहउछि नमस्कार।